सर ये पहले बोल देते हैं। नमस्कार। साहित्य अकादमी की ओर से आज होने वाली महिला लेखन सम्मेलन में ये कार्यक्रम हो रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। आपको सभी को शुभकामनाएं देते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि परमादरणीय सचिव महोदय डॉक्टर के श्रीनिवासराव जी से कि आज का जो उद्घाटन प्रस्ताव देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है प्रख्यात पंजाबी लेखक, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता परमादरणीय अजीत कंवर जी को, और साथ साथ आज का इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि सुश्री नासरीना शर्मा जी को सम्मान करने के लिए सर। Is happy. When the society is happy, the state is happy. When the state is happy, there will be a peace in the country and it will develop a greater pace. With these few words, may I request Sachin Mahoday to kindly present the welcome address. Sir. Thank you, Suresh. Respected Madam Ajit Kaur ji, eminent Punjabi writer, scholar and President of FOSWAL. Respected Srimati Nasira Sharma ji, eminent Hindi writer. Professor Malas Lal ji, eminent English writer and scholar. Dr. Aparna Kaur ji, eminent scholar and painter. Professor Soma Mukhopadhyay ji, Vice Chancellor, also eminent scholar, writer in Hindi, and all the participants of this program and friends. I am glad to welcome all of you for this Women Writers Meet as part of Academy's celebration of International Women's Day 2023. Friends, historically, women across the world have been underrepresented in all the spheres of human endeavor, and also wherever they are adequately represented, they have been overutilized and exploited. It is not true of one or two generations or few centuries, but true of every era over the past 5,000 years or so. In fact, women got voting rights much after many so-called underdeveloped countries of the world. In Europe also, women were not entitled for higher education till 100 plus years ago. And in many developing and underdeveloped countries, women did not pursue higher education due to the fear of social taboos and practices, and not due to any government laws. So, all in all, it is clear to everyone that so-called progress of the developed nations was not the real progress, as they did not carry along every section of the society. One may wonder and ask why this stress on the growth and development of women. More than any reason, women are the life makers and carriers of culture. Without women, social customs and practices, education and entertainment, cultural traditions and philosophies are not possible. And also it is not possible to pass on these from one generation to the next without women. Women give every person nourishment, life, mother tongue, and it is through the mothers that everyone makes first sense of the world around and also learn to talk and walk. So no society can claim to be progressive if they cut out women, and all that one has to do to have a look at the history of all the nations if they wish to check the veracity of this statement. In this light, it is gladdening to note the large number of women writers in the country, and it is indeed true that we have a long way in the past 100 years or so, especially after independence. Is this sufficient?
That is a question. The resounding answer would be no. Still, there are many sections of our society where women are not allowed to write and publish. There are many sections of our society where women fear to write openly about something is apparent as a broad daylight. Also, there are many highly talented women writers who struggle a lot to publish their works. Even though we have come a long way, it would not be wrong to say that the Indian languages publishing sector is still very male-oriented and male-dominated. One way to encourage the women writers of India is by giving the platforms to them so that they can express themselves. That is what precisely Sahitya Academy is doing. Sahitya Academy is a platform called Nari Chetana, dedicated exclusively to women writers of India in 24 languages to enable them to express their views about various aspects of literature. Nari Chetana is apart from the regional and national level women writers meet that Sahitya Academy regularly organizes in different parts of the country every year. This year, the United Nations has declared a theme for International Women's Day, Digit or Innovation and Technology for Gender Equality. It is shocking and yet not surprising that more than 40 crore women do not have access to internet or any digital mechanism whatsoever. Yet on the other hand, crores of women are championing and driving the change and success in digital sector. This theme is to recognize and celebrate the women and girls who are championing the advancement of transformative technology and digital education. I mentioned about male-dominated Indian language publishing sector, and it is gladdening to note that in the publishing industry, in at least one sector, women have progressed and have commenced to dominate, that is Indian English publishing industry. It is wonderful to see so many talented women on top of the charts in that sector, and I am sure their success and growth will inspire women writers and publishers in various Indian languages to emulate and surpass them. Then we will have equality, and till that time we all have to strive to promote quality women writers in all the Indian languages. Then we can call ourselves a progressive society. With these few words, I am glad to welcome all of you for this Women Writers Meet once again. Thank you all. Thank you very much, sir. As it was rightly pointed out in Rigveda, long back, it was also described highly that there were 32 great women scholars who used to dominate the society in all walks of life. And taking this account, Rabindra says that aham kreturaham rudra aham ugra vivachani mamedaru kratum patihi sehanaya upacharet, which means the woman is saying during the time of Rigveda that I am the one who knows everything, I have the talent of oratory skills, I am the one who possessed with a lot of power to do anything, and I am the only one who can defeat others. So thank you very much, sir. Now may I request Madam Ajit Kaur ji, who is an eminent Punjabi writer, the president of Foundation of Sark Writers and Literature, Academy of Fine Arts and Literature. She has around 50 published books to her credit, including short stories collections, novellas, travelogues, research works, edited and translated works. Her works have been translated into major Indian and foreign languages. Several of her feature films were made on her stories, and a number of films were made on her by Doordarshan, US Library of Congress, mass communication graduates of Jamia, etc. She is the recipient of Padma Shri by Government of India, Sahitya Academy Award, Bharatiya Bhasha Parishad Award, among others. With these few words, may I request Ma'am Ajit Kaur ji to kindly present our inaugural address on this occasion. Ma'am. मैं सोचती हूँ आपने
इंटेलेक्चुअल एड्रेसेस समझिए, राव जी का, प्रभु जी का अंग्रेजी में, तो क्यों ना हिंदुस्तानी में आपको कुछ चुटकुले सुनाए गए, नथिंग इंटेलेक्चुअल। तो पहला चुटकुला तो ये है कि 1973 में इंदिरा गांधी ने सोचा एक इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे इन मैक्सिको। तो तब मिनिस्ट्री होती थी एजुकेशन, जिसमें सारे कल्चर वल्चर सब होते थे, कंबाइंड मिनिस्ट्री। तो उसकी सेक्रेटरी थी बड़ी पावरफुल मिस्टर रामाचंद्रन। उसको बुलाया कि जो मैक्सिको में बोर्ड में होनी है कॉन्फ्रेंस, उसमें एक अपने इंडियन विमेन के बारे में किताब बनाओ, डायरेक्टरी बनाओ। वो 4-5 महीने लगी रही, कुछ हुआ नहीं। उदास बैठी थी। उसके भाई ने कहा अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक ही सिर्फ की औरत है, अजीत कौर, उसको पकड़ लो, वो रात दिन लगा के तेरा काम कर देगी। तो उसने मुझे पकड़ा, घर आ गई, क्या अजीत कौर थी, मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आई एम श्योर उसने मेरा एक लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा। और उसने कहा कि मिसेस गांधी का ऑर्डर है और हमसे हो नहीं रहा। मैंने क्या करता क्या है, सोशल वर्कर्स की डायरेक्टरी बनाती है। मैंने कहा give me 24 hours, there is some major flaw in your view। तो मैं 24 hours के बाद बताऊंगी फ्लॉ क्या है। और 24 hours के बाद वो फिर आ गई। मैंने कहा सोशल वर्कर्स अगर करोगे, मिसेस गांधी भी उसमें नहीं होगी। वो तो सोशल वर्कर नहीं है, वो तो स्टेट पे है। तो तुम जब तक सारे प्रोफेशंस की सारी औरतों को लेके डायरेक्टरी नहीं बनाती हो, तो डायरेक्टरी का कोई मतलब नहीं। स्टार्ट विद आर्टिस्ट ए, go on to businesswomen, go on to doctors, and etc. मैं क्या 10-11 प्रोफेशंस हैं जिसमें औरतें हैं, सबको करो। ये वो तो मिसेस गांधी का वो मैक्सिको कॉन्फ्रेंस में कौन ले जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, इसको 2-3 साल लगेंगे। तो मुझे पकड़ के वो मिसेस गांधी के पास ले गई। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट। तो मिसेस गांधी ने कहा जो ये कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, भूल जाओ मैक्सिको कॉन्फ्रेंस, इसको करते रहो। मुझे पूछा कितने पैसे लगेंगे, मुझे नहीं पता पैसे पूछे। मैंने डरते डरते कह दिया शायद 2 लाख लगेगा। 2 लाख नहीं ले चुका। बाद में पता चला है मैं कितनी टूरिस्ट थी, अभी भी हूँ। तो 2 लाख मनवा के मैं आ गई और काम शुरू कर दिया। और मिसेस गांधी हर महीने 1.5 महीने बाद रामाचंद्रन को मुझे बुलाती थी ब्रेकफास्ट पर कि कितना काम हो, ब्रेकफास्ट देखो और प्रोग्रेस भी बताओ। तो शी became quite close to me। उसके बाद आया 1975, अभी काम हो रहा था। 75 में लगी इमरजेंसी। जिस दिन इमरजेंसी लगी उस दिन रेडियो पे मेरी कहानी ब्रॉडकास्ट होनी थी और रेडियो का प्रोग्राम करती थी अमृता प्रीतम। मैंने कहा अमृता जी क्या हो गया? क्या होना क्या? बजट के लिए बड़ा अच्छा हो गया, इंदिरा गांधी ने बड़ा अकल में काम किया। मैंने कहा सत्यानाश हो गया अमृता जी। कहती नहीं तू मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं पता, मैं तेरे से बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ। कहानी पढ़ी, मैं वापस आ गई। उसके बाद अमृता प्रीतम ने सारे पंजाबी राइटर्स के एक बनाया चिट्ठी कि बड़ा अच्छा काम किया इंदिरा गांधी ने, वंडरफुल, देश के लिए बहुत उत्तम काम है, इमरजेंसी लगाना।
देश बड़ा सुंदर रहेगा, नीचे सबके साइन है। मैंने कहा मैं तो नहीं करती साइन। कहती है बड़ा गलत होगा, लगा तुम्हें जानती है वो पहचान लेगी तेरे साइन नहीं है। मैंने कहा फांसी दे देगी, जेल में डाल देगी और क्या कहें, श्रीनिवास पद्मा करवा रहा। बाद में श्रीनिवास पद्मा और अमृता विक्रम दोनों को राज्यसभा सीटें मिली चुनाव में, आपको होता है। तो इंदिरा गांधी, उसके बाद ठंडा ठंडा पद और पद, और इसको रख दिया कूड़े में। मैं तो नहीं रख सकती, मेरे तो इसमें जान लगी हुई थी। तो मैं करती रही। एक दो दोस्त मिल गए अच्छे, विशेष टंडन। उसने कहा मैं तेरे लिए इसमें एडवर्टाइजमेंट करके कर देता हूँ। और मेरे भाई गोपाल टंडन वो भी करते हैं। और तूने तो क्या क्या बेचेंगे, फ्रिज तक मेरा बेच चुका। तो ऐसे अच्छे लोग भी मिल जाते हैं। और ये डायरेक्टली खत्म हुई 76 में। तो जटी थे उसका वाइस प्रेसिडेंट। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में इसको रिलीज किया। कोई 3-4 हजार लोग आए थे और इस तरह से ये रिलीज हुई थी डायरेक्टली ऑफ इंडियन। देखो This is the best document on women anywhere in the world. Okay. तो एक चुटकुला तो ये था, अच्छा है ना? अब देखिए दूसरा चुटकुला, ऋतु मैडम जो काली की उसने कहा एक औरतों की कॉन्फ्रेंस हो रही है हैदराबाद में, पंजाबी को तो तू ही रिप्रेजेंट करेगी, तो चल। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो ऋतु मैडम मुझे हैदराबाद ले गए। पहली बात तो ये कि वहाँ कोई स्कूल था या कॉलेज था जिसमें छुट्टी है थी, सारे कमरे खाली पड़े थे। आपको भी बताओ ऐसा भी हो सकता है, सारे कमरे खाली पड़े थे। एक एक कमरे में प्लास्टिक थी, एक चारपाई और एक चादर थी। हम सबको एक एक कमरा दे दिया और रसोई थी जिसमें एक बड़ा सा भिगोना पट्टी था, उबले चावल, एक भिगोना सांभर, केले के पत्ते डालो और खाओ। वही ब्रेकफास्ट, वही लंच, वही डिनर। उससे हम 30-40 रुपए का खा लेते होंगे दिन में। उसमें अनामिका थी मेरे साथ वाले कमरे में, अनीता डिसाइड थी तीसरे कमरे में। बाकी जो औरतें थी उनको हम पहचानते थे। तो इस तरह से उन्होंने हमें ठहराया, खाना हमें खिलाया। और वहाँ जो ऑडिटोरियम था उसमें कॉन्फ्रेंस होती थी। 4 औरतें अमेरिका से आई हुई थी जिन्होंने फंडिंग किया था, जिसमें एक नॉन वाइट थी, 3 वाइट थी। तो वो बैठ के सुनती रहती थी, सब उर्दू में बोल रही थी। किसी को समझ नहीं आता होगा, वो बैठी है देखते हैं कि हमारा पैसा ठीक तरह से खर्च हो रहा है। तो सब आते हैं, मेरी तो सास बड़ी बुरी है, लिखने नहीं देती, कहती है रसोई का काम कर, मेरा पति बहुत बुरा है, वो कहते हैं अगर मैंने लिखा तो मैं मशहूर हो जाऊंगी, तो वो जनरल स्पीक करता है और मेरा पब्लिशर नहीं मिलता और क्रिटिक कोई हमें पूछता नहीं।
जब मेरी बारी आई मैंने कहा मुझे तो कोई तकलीफ नहीं हुई कभी। मेरा तो पब्लिशर आके कहता है आज इसको कहानी दे दे, और मैं कहती हूँ भी लिखी थी, वो कहता है जब शाम को मेरे साथ खाना खा और मुझे ले जाता है खाना को, मुझे अपनी बेटी ले जाता है होटल में, वो खाता है दाल रोटी, हमें कहता है तो बंदी खाओ, तो मैं एक कहानी लिख हर कहानी का वो पहले से मुझे बस्ता लगाता है, खाना खिला, हम कभी बड़े होटल में कहीं भी भूले जाते हैं, तो इस तरह से निकाली थी। ऐसे ने एक मेरी पहली किताब 1960 में छपी थी, उसको बेस्ट बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो उसकी से दूर की लंदन में रहती थी, उसने एक किताब छापी थी, हमें दिशा सोचती तो नहीं था, मेरे पास रिलीजा में अपार्टमेंट में बेच के वो करवा जरूर। तो मैंने संजय से मुझको कहा तेरी सहेली ने क्या किया, तो मैं तो कहते क्या फर्क कहते हैं, फर्क कहते हैं क्रिटिक के मुंह से निकला हुआ शिक्षक, मैंने कहा लानत देते रहे क्रिटिक होते थे, मैंने ऐसे ही कहा और मैंने वो मेरे से बोला, लेकिन एक क्रिटिक था जो बड़ा ईमानदार था, मर गया। हमेशा बिल्कुल असली क्रिटिसिज्म करता है और उसको तैयार एक और है रणवीर सिंह, तो जो वो जाट है, जो जाट राइटर है वो फर्स्ट क्लास, जो जाट नहीं है वो पूरा। तो ऐसे ऐसे तो बड़े क्रिटिक है, तो जाती थी। तीसरी एक और बात हाँ मैं कहने वाली थी कि जहाँ तक औरतों की राइटिंग का सवाल है, आप मैं तो शुरू में नहीं कहती थी, या तो गुड राइटिंग होती है या तो डॉक्टर राइटिंग होती है, मैन राइटिंग और वुमेन राइटिंग कुछ नहीं होता, या तो आप अच्छा लिखते हैं या तो आप बुरा लिखते। तो वेबसाइट तो क्या के अपने आप को रियायत दिलवा लेगा या अपने आप को रियायत दे देगा, गलत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि कई चीजें ऐसी है जो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये औरत ने लिखा है कि आप ही ने लिखा है। जैसे एक कविता की लाइन है, सुपने विच तुसी मेरे असाधु, आप मुझे सपने में बैठे असा कागल पकड़ी पाई, अपने भाग के आपको अपने आलिंगन में ले, मेरा रूल तुसी हाथ ना आए, लेकिन मेरे आलिंगन पे तो जाए नहीं, क्योंकि आपको इलाही मूल थे। साड़ी कंपनी रही कलाई, हमारी तो कलाई एक कंपनी रही, आप हमारे आलिंगन में आए नहीं, आप तो मूल थे, आपको इलाही मूल थे। अब ये लगता है किसी औरत ने लिखा नहीं तो ना, एक भाई ने लिखा, तो आप क्या कहो? सारी गुरु ग्रंथ साहब में 1430 पेज है गुरु ग्रंथ साहब में, सारी वाणी या तो 6 गुरुओं की है या 15 भक्तों की है। जो गुरुओं की वाणी है उसमें सारा जो सिंपलाइज किया हुआ है कि हम सब जो प्राणी हैं, हम औरतें हैं, हमारा खाविद परमात्मा है, सारी वाणी औरत बेस्ड है, the whole वाणी is औरत बेस्ड। और बड़ी मजेदार बात यह है जो कई जगह बड़ी सेंसुअल भी है, अब सिख सुनेगा तो मुझे मारेगा। जैसे है आज ना सुती कंत से रात में नहीं सोई अपने घर वाले के साथ, कसम के साथ, कंत के साथ, आज ना सुती कंत से हम तो घोड़े फोड़ जाए, मेरे
कि घर वाले उनके पास नहीं है, उनसे पूछो तुम क्यों रह के आए, तुम्हारी रात कैसे गुजरती है। ये एक ब्रेन ग्रुप है और ये फेमिनिन करते हैं। There is no distinction between अब किस्सा सोचती मित्रों मर्दानी खाली एक औरत देख सकती, लेकिन यारों के यार बड़ी मर्दानी कहानी है। किस्सा सोचती लड़की बहुत बहुत धुआंधार मर्दानी है। हमें तभी तो अटैक हमारे साथ में एक औरत ही लिख सकती, उनका नावल पिंजर एक औरत ही लिख सकती, लेकिन बाकी रख रहा है कोई भी लिख सकता। आपकी जो there is no distinction like that. It is only good writing or bad writing that matters. And thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आप इतिहास है और आपके साथ इतिहास है, वो ये पूरा इतिहास को सामने लाना बहुत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपने बहुत कम समय में आपने बहुत सारे बातें हमारे सामने रखा। धन्यवाद। जैसे हिंदी में कहा है कि नारी लक्ष्मी शारदा, नारी दुर्गा रूप, नारी दुख को सुख करे, नारी शक्ति अलूप। नारी से घर स्वर्ग है, नारी से घर स्वर्ग है, रहता प्रभु का वास है। विपदा सारी दूर हो, जीवन में उल्लास है। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूं प्रख्यात जाने माने हिंदी साहित्यकार डॉक्टर नासिरा शर्मा जी को। She is an eminent Hindi writer, journalist and an expert of Iranian culture, politics and also its art and literature. She has more than 60 published books to her credit in different genres like novels, short story collections, article collections, memories, children literature, translated and edited books, besides many published works in literary journals and magazines. She has immensely contributed for the documentaries made for Doordarshan, French and German on Iranian prisoners of war. She has written scripts, dialogues and acted in various TV films, serials, etc. Several magazines have brought out special issues on the life and works of Nasira Sharma ji. She is the recipient of many prestigious awards and honors, including Sahitya Academy Award, Vyas Samman, Mahadevi Verma Puraskar, etc. With these few words, may I request Sri Nasira Sharma ji to kindly present your chief guest at Prasad. Ma'am. अनिल जी और आप सभी को होली की मुबारक और फिर महिला दिवस से शुरू होने वाला है। मुझे खुशी थी इम्तिहान दी थी जब मैंने सुना कि आज अजीत कौर जी आ रहे। मेरे ख्याल से हम लोग 25 साल बाद मिले। उसके बाद भी हम लोग मिले हैं और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उस वक्त थे और बहुत ही जिसे कहते हैं देश कलम की और किसी आपको कुछ तो तजर्बा इससे हो ही गया होगा। कृष्णा जी, अमृता जी और अजीत कौर जी। अजीत कौर जी के दीवाने बहुत थे। खट्टा मीठा जो भी अनुभव होता है औरतों को वो होता है, लेकिन जो उस दौर की औरतें थी वो सीधे बात करती थी और ये बात सही कह रहे हैं कि हम लोग के घर तक घंटी बजा के संपादक पहुँच जाते थे और कहते थे आप इस पे लिखिए और यहाँ तक कि कार्ड डाल के कहते थे आप हमारे साथ चाय कीजिए, हमें कुछ डिस्कस करना है। आज वो दौर नहीं। आज आपको 10 मरतबा देखना पड़ता कौन जान पहचान का है
और किस तरह से चीज़ें छप सकती, पहुँच सकती। एक छलांग के साथ ज़माना बदला है और ज़माने में ये हो गया है कि एक बहुत ही पुरानी चीज़ जो हमारे बुजुर्ग औरतों ने बिना विमर्श के, बिना शोर शराबे के कमजोरों की आवाज़ उठाई है, उसमें उत्पीड़न तो सबसे ज़्यादा औरत ही का था। लेकिन वो औरत की वो शिकायत उन लोगों ने कभी नहीं की जो आज की लड़कियां या महिलाएं करती हैं, क्योंकि वो समाज को लेती थी। समाज में जितने लोग थे उनको लेती थी और फिर औरत की स्थिति और इस चीज़ों की उठाती थी। मेरे ख्याल से अगर खाना बदोश किसी ने पढ़ा है तो कभी उससे निकल नहीं सकता है। तो ये तो मेरा बहुत ज़्यादा प्यार, रेस्पेक्ट और बहुत कुछ कृष्णा जी की याद, अमृता जी की याद के साथ आज अजीत गौर के साथ थोड़ा जज्बाती हो गई हूँ। ये बात सही है कि हमारे बुजुर्गों ने हमको बहुत प्यार दिया और बहुत रेस्पेक्ट। तो इसके बाद मैं एक पॉइंट जो उठाना चाहती हूँ जो अजीत गौर जी के ही उससे होगा। पूरी जो वुमेन्स राइटिंग है उसमें मैं सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी 75% ऐसी है कि शिकवे शिकायत नहीं ढल रही है, खासकर मर्दों से। तो जो जाती गम है या जाती झुंझलाहट है, उसको जब आप अपनी राइटिंग में लाते हैं तो या तो वो कार्बन कॉपी बनती जा रही है, एक तरह का सब लिख रहे हैं, सबको वही शिकायत है और मर्दों के साथ रह भी रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं और बहुत बना के भी, लेकिन पति बुरा करता है, उसकी कोई चीज़ हम मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमारे पर हैंगओवर है पुराने पतियों का और ससुराल का, जो कि ठीक नहीं है, संतुलित नहीं है सोच। और इसी झुंझलाहट में मैंने एक पूरा अनुवाद तो मैं करती नहीं थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अनुवाद किस तरह के बैकग्राउंड के लोगों का मैं कर रही हूँ। लेकिन जब मैं बहुत ज़्यादा पक गई, स्त्री विमर्श और संतुलन खो रहा है, आप एक इंसान के खिलाफ खड़ी हो रही हैं बिला वजह, भाई वजह हो तो बात, लेकिन चूंकि आपको पावर मिल गया है इसलिए आप उसको बेजा यूज कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए कानून बने वहाँ का कानून नहीं पहुँच रहा है। कहना नहीं चाहिए, अभी रॉय साहब ने ये बात कही कि अमेरिका ये कर रहा है। अमेरिका से मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि उसने एक ही लड़की को ले ली है, उसका नाम क्या है, इस वजह से उसके अलावा वहाँ की औरतों पे क्या गुजरी, ये तो कभी अमेरिका ने देखा ही नहीं। जहाँ था वो यूसुफ जई है, क्या नाम है उसका, मलाला यूसुफजई, एक बच्ची को आप रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं और कहते हैं कि आप मदद कर रहे हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं हैं, इस तरह का जो एटीट्यूड है, उसके खिलाफ तो आज औरतें आवाज उठा रही, लेकिन ये मत मुझे बिना मत दे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज हम लोग जो हैं वो अपने दम पे तो है ही हैं, जो ये पीढ़ी है, लेकिन उसके साथ उस वक्त मर्दों से ज़्यादा टक्कर थी, क्योंकि कदावर मर्द पब्लिशर भी थे, राइटर भी थे और विचारक भी थे, उनके बीच खड़ा होना आसान नहीं था। आज आपका रेशियो बराबर है, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मिजोरम की एक कवित्री थी, और वो किस ज़माने में थी ज़माना नहीं बताया जाता है, लेकिन लोग साहित्य पे उनका बहुत जोर था और उन्होंने हर सब्जेक्ट को उठा के गाया, तो उनको जिंदा उनको दफना दिया गया था। तो उन्होंने एक बात कही थी, उनका नाम था हमू कामी। तो उन्होंने कहा था, जवानों, ऐ मेरे गांव के जवानों, दफन करना मुझे इस बार पूरी महारत से, यानी कि तुम जिंदा वो कर रहे हो, मैं तो उठूंगी, बार बार उठूंगी। और आज इस तरह की औरतें जिन्होंने हमारा रास्ता साफ किया, जिन्होंने हमारे रास्ते के कांटे हटाए और हमें यहाँ तक पहुँचाया, तो
ये उन्हीं में से एक है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि जो मर्द को देखने का अंदाज है, ये नहीं है कि औरतों ने सहा नहीं, बहुत सहा है, लेकिन औरतों ने हुकूमत की है, औरतों ने ही बर्बाद किया है बहुत कुछ घरेलू पॉलिटिक्स की वजह से। तो अगर हम देखते हैं तो मजाज की बहुत मशहूर नज़्म हमारे सामने आती है कि इस पर क्या है उनका शेर, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। ऐसा नहीं कि मर्दों ने औरत को लेके ख्वाब नहीं देखा कि अपने साथियों को लेके आगे बढ़े। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कहा जाता है जो बहुत ही बुजुर्ग हो गए लोग 80 के और 90 के, कि अगर हम अपनी बहनों का हाथ पकड़ के ना लाते तो एजुकेशन मुसलमानों में इतनी ना है, क्योंकि सर सैयद ने यूनिवर्सिटी खोली, ये तो तय नहीं किया था कि औरतें ही आएंगी या मर्द आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि नून मीम राशिद हैं, वो भी उर्दू के हैं और उनकी एक नज़्म मुझे बहुत ही पसंद है, जो पूरी जिम्मेदारी वो औरतों पे डालते हैं। आप देखिए कि औरत को वो लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत प्राइवेट हैं, वो अपनी हम शक्ल को कहाँ पे देखना चाहते हैं, बराबर से देखना चाहते हैं। तो उनकी ये जो नज़्म है वो मुझे बहुत पसंद है। जिंदगी से भाग कर आया हूँ मैं, ऐ मेरी हम रक्स उसको मुखातिब को औरत से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मर्द सहते नहीं हैं, मर्द परेशान नहीं होते हैं, और बचपन से आखिर लोग मर्द को बताते हैं वो क्या है। तो नई माएँ तो जब इस तरफ ध्यान देंगी तो समाज को बदलेगा, पूरा एटीट्यूड बदलेगा। इसी तरह अहमद शामलू ने औरत को बहुत इज्जत देते हुए कहा, और उस वक्त कहा कि जब शाही सावक पुलिस के पहले प्रिय थे और एक दूसरे अंदाज का मुहावरा था, और उनका खुदारा खुदारा दोशीज़ाएं हरगिज़ खामोश ना हो। उस समय जब उनके मर्द थकन बना उम्मीदी से बूढ़े हो गए, आपको बराबरी दे रहे हैं और आपको अपने से ज़्यादा मजबूत समझ रहे हैं। तो एक पक्ष जो है जालिम मर्दों का और एक्सप्लॉइट करने वाले मर्दों के अलावा भी एक सेंसिटिव लोग भी हमारे बीच में हैं। तो रुकैया शेखावत का जो सुल्ताना का सपना है, उसके उन्होंने जो ख्वाब देखा वो देखा कि औरतों का साम्राज्य हो गया है, क्योंकि वहाँ पे घुटन बहुत ज़्यादा घुटन, उस घुटन में ऐसे ख्वाब देखे जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस तरह के ख्वाब देखना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। मेरी अपनी नॉवेल है दूसरी जन्नत, तो उसमें एक लड़का है जो डर के ख्वाब देखता है, और वो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी का। ख्वाब देखता है कि पूरी दुनिया बदल रही है और हर जगह औरत है। इसलिए है कि औरत ने अब कह दिया है कि हम बेटे नहीं पैदा करेंगे। वैसे तो ये तालिब रहने वाली बात है औरत के लिए, और लेकिन मुझे लगता है समाज के अंदर जाएगा अगर इस तरह के रेवोल्यूशनरी चीज़ों के ऊपर यथार्थवादी कदम चल पड़े, तो एक अजीब सी सोसाइटी होगी जिसका मुझे हमेशा डर रहता है। लोग गलत अक्सर समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मर्दों का साथ देती हूँ और औरतों को के ऊपर इल्ज़ाम देती है। दो लोगों ने ऐसे कहा जो समझदार को ये बात समझते हैं। बात सिर्फ ये है कि मर्दों ने जो किया उसका बदला आप लेना चाहते हैं, अपनी राइटिंग के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए, और आप किस तरह की आज़ादी चाहते हैं। जैसे नेपाल की एक कवित्री है, वो कहती है मुझे सड़क से आज़ादी चाहिए, घर से आज़ादी, दीवार से आज़ादी, यहाँ तक अपने आप से भी आज़ादी चाहिए। तो ये एक रोमांटिसिज्म है, हकीकत। तो जो मेरा कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव को
पॉइंट्स जो हमारे स्त्री विमर्श में आ रहे हैं या पूरे समाज में उभर के आ रहे हैं, जिसमें आपका बंटी भी नजर आता है और दूसरे किरदार भी हमारे जो पुरानी लेडी राइटर्स ने लिखा, जेंट्स ने लिखा। तो मैं तो बहुत पहले से ये जानती हूँ कि मैं दो बिलीव करती हूँ। एक तो ये है, जैसा अजीत जी ने कहा कि औरत का दिमाग में बड़ा होता है, हम लोग दिमागी तौर से और हुनर के लिहाज से एक है, अगर हुनर है तो वो चमकेगा। और ये कहना कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एक हद तक हर आदमी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसके बाद ये आपका है कि आप एक्सप्लॉइट होके कुछ लेना चाहती हैं, लेना चाहते हैं। आज जिस तरह से हम हैं, आपको ये बात मैंने कई मरतबा कहा कि बहुत छोटी छोटी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं। मर्द को बुरा भला कहते या मर्द औरत का मजाक उड़ाते या औरत को बदनाम करते, इस सोसाइटी में और इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हैं जिनके बारे में ना हम लिखते हैं, ना सोचते हैं और ना कुछ करते हैं। आप देखिए कि इस वक्त कितनी बुरी हालत है। कई जगहों पे जंग चल रही है, वहाँ की औरतों की क्या हालत होगी। कहीं पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं महंगाई और बेकारी है। ये नहीं है कि मर्द सह नहीं देते, लेकिन मर्द जो है वो करें क्या? तो आप क्यों नहीं सिस्टम को पकड़ते हैं, क्यों नहीं उस थॉट को पकड़ते हैं जहाँ से इंसानी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो रहा है। क्या अफगानिस्तान में हमारी अपनी राइटर बंगला की मारी नहीं गई, लेकिन कितने लोगों ने उसके लिए गम मनाए, या अमेरिका ने उसके लिए क्या किया, या उस औरत के लिए क्या किया जो बाद में संसद की मेंबर बनती और उसकी माँ ने उसको धूप में डाल दिया था और वो चली जा रही थी। तो पड़ोसन आई, बोली बच्ची को इतनी गर्मी में तुमने धूप में डाल रखा, तुमको मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में मरेगी। मेरे सामने मर जाए, बिना सहे कुछ मर जाए तो ये इसका अच्छा ही रहेगा। तो उस दौर में वो पावर को लोग जो रसद देते हैं या कुछ करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क रहा है। हमारे रिश्ते जो हैं पड़ोसी मुल्कों से बहुत अच्छे रहे, सरकार उनकी जो भी करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इलाकाई अगर आप चाहते हैं सिक्योरिटी, तो आपको सारी औरतों को लेके चलना चाहिए। औरतें जो हैं वो ये भी कहा जाता है कि औरतें वर्गों में हैं, एक नहीं है। जैसे आप दूसरी औरतों को देखिए जो दलित हैं, उनको बुलाया नहीं जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ऐसा है नहीं, क्योंकि जो अच्छे लिखने वाले हैं उनको खूब बुलाया गया है, उनको इनाम दिया गया है। और यही हालत प्रवासी लेखकों की भी है कि हमने उनको भी बहुत प्यार और इज्जत दिया है। हिंदी का दामन बहुत बड़ा है और हमारा दिल भी बहुत बड़ा है, लेकिन देने का मतलब ये है कि अपनी एनर्जी और अपनी चीज़ें जो हैं आप बिना वजह के सनसनीखेज जिसे कहते हैं उसमें मत जाइए। आंदोलनों में वो बात कीजिए कि आगे वाली नस्ल आपकी क्या चाहती है। एक चीज़ मैं और कहूँगी जी, और जी पता नहीं उस वक्त आपका क्या तजर्बा रहा है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हमारा वो प्रकाशक का अजीब सा रिश्ता है। हम खुल के एक मंच पे बैठ के बात नहीं करते, हम पीछे एक दूसरे का कंधा लेकर रोकते हैं। ये मूवमेंट क्यों नहीं उभरता है औरतों से? आप बात करते हैं दुनिया बदल देंगे, घर बदल देंगे, इसको छोड़ देंगे, उसको छोड़ देंगे। मैं लड़ने को नहीं कह रही, लेकिन हम राइटर्स अपनी परेशानियां बताएं, और प्रकाशकों को भी बहुत परेशानियां हैं, ये मत समझिए। लेकिन कहीं तो कम्युनिकेशन होगा ना, कहीं तो चीजें होंगी, और बजाय इसके कि इस तरह की चीजें कीजिए। शार्मली मैंने लिखी थी, तो उसका एंड मैंने खुला छोड़ दिया था, क्योंकि वो नई औरत थी जो सोच रही थी।
उसके लिए तलाक बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि तलाक देना और लेने का दौर गुजर चुका था। लेकिन किसी ने भी उस पर वैचारिक तरीके से बातचीत नहीं की। सबने ये कहा वो मुश्किल है, रह गई, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि वो अपने घर में रह रही है, अपने सरकारी नौकरों के साथ रह रही है, तो उस औरत के साथ क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए सोसाइटी का। लेकिन उसमें हम लोग शरीक रहते हैं कि वो हक हम अपनी ही हम शक्ल औरत को नहीं देना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि है हमारे यहाँ औरत और बात दोनों ही निगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले दफ़ा जब मुझे बुलाया गया था तो भी मैंने कुछ चीज़ें एतराज़ के तौर पे दर्ज की थी, क्योंकि देखिए हम लोग के लिए खुशी का मौका तो है। हम पूरे साल जो है स्ट्रगल करते हैं, हम लिखते हैं, हमें वो चीज़, लेकिन हमको झाँक के देखना भी चाहिए आईने में अपने व्यक्तित्व के कि एक्चुअली हम हैं। कोई बहुत अच्छा लिखता है तो हम उसको इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इसकी पहुँच बहुत है, लेकिन देखिए वाकई उसकी राइटिंग अच्छी है या नहीं है, वो पहुँचा कैसे। तो क्योंकि मैं बोलूँगी तो बोलती चली जाऊँगी, तो इसलिए आप लोग की इजाज़त से फिर अगली दफ़ा कुछ और सवाल लेके मैं आऊँगी जो बुनियादी हैं, क्योंकि आपका कविता संग्रह छपता क्यों नहीं है, इसके ऊपर पूरी कई चीज़ होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, सब होना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। राजू, अब हम लोग पटल पर देखेंगे एक नासिका शर्मा जी का एक कविता है, मैं शामिल हूँ या न हूँ। वर्षों पहले वो गर्भवती जवान औरत मेरी थी मेरे उपन्यास के पन्नों पर खून से जानती थी या डरती थी, या थी अफ्रीका की या फिलिस्तीन की या फिर हिंदुस्तान, क्या फर्क पड़ता है। तो कहाँ वो लेखिका जो पूरे दिन से थी, जो अपने देश के इतिहास को शब्दों का जामा पहनाने के जुर्म में लगाती रही चक्कर न्यायालय का, देती रही सफाई ऐतिहासिक घटनाओं की सच्चाई, और लौटते हुए फिक्रमंद रही उस बच्चे जो सुन रहा था किसी अभिमन्यु की तरह सारी कानून। वो जो अपनी आवाज दबा न पाई और चली गई शराब गर्भ में पलटे हुए एक नए चेहरे के साथ। ये तो चंद हकीकतें हैं, चंद फसलें हैं, जाने कितनों ने तख्त पलटे हैं वो पुरानों के, घर में भी और बाहर भी अपनी गुमनामी के बावजूद। हर मोर्चे पर लड़ रही हैं ये औरतें, छोड़कर अपनी जन्नतों की सरहद, छिपा देती हैं कभी अपने वजूद को अपनी ही चीतकारों और सिस्कियों से। अक्सर वो तोड़ देती हैं उन सारे पैमानों और पुतलों को जिसमें उतारी गई है वो बड़ी महारत से। दीवानी हो चुकी है ये सब औरतें। मैं शामिल हूँ या ना हूँ, मगर हूँ तो इस कालखंड की जश्नवीर गवाह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नासिका शर्मा जी, क्योंकि ना आपने अपने भाषण में न केवल औरतों को आज का स्थिति के बारे में आपने जिक्र किया, साथ साथ आमतौर पर आज का स्थिति और समाज में कैसे होना चाहिए और जिसके लिए हमारा कर्तव्य क्या है, इन बातों पर आपने अपने राय रखा है, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। With this, the inaugural session of this Women Writers Meet has come to an end, and we shall proceed to the Poets Meet.
where we have eminent poetesses from various languages with us. And this session is going to be chaired by none other than Professor Mala Srilalji. Ma'am, may I request you to kindly chair this Poets Meet session. Professor Mala Srilalji, she is an eminent English writer, scholar, and retired professor in the English department, University of Delhi. She has 16 books to her credit, including In Search of Sita, Tagore and Feminine, Finding Radha. Her specialization is in literature, women and gender studies. Her poems and stories have been published in Indian literature, Confluence, the Bacon, online portals and anthologies. She was a senior consultant to the Ministry of Culture and has served on international book award juries. She is a frequent speaker at literary festivals and visiting professor, Indian Institute of Advanced Studies, Shimla, received a Rockefeller grant to the Bagaglio Study Center, Italy, Shastri Indo-Canadian grants to York University, etc. With these few words, hearty welcome to this session, ma'am, and may I request you kindly guide this session. Good morning, everybody. It's a great honor and a privilege to be here and to chair this session on women's voices through poetry. I'm deeply, deeply honored to have sat through the inaugural session, having heard after some time, and such an inspiring talk. Thank you so much. और आपने जो चुटकुले सुनाए वो चुटकुले से बहुत बढ़ के तो इतिहास बनते हैं. Nasira Sharma ji, your speech was also very inspiring. So after this, as we move into the next session of actually hearing the direct voices of poets, and I have 13 poets on my list, I will just make a few introductory remarks, taking off from where Dr. Rao mentioned. The theme of International Women's Day this year is Digital, Innovation and Technology for Gender Equality. And just as Dr. Rao presented his thoughts about the subject and the theme, I want to ask some questions with reference to what is happening in Indian literature by women. Is digital really accessible for all our sisters who are writers in the country? The answer is probably no. Is digital available to all those who write not in English? What about all the many languages in our country? What about the oral literature? The women in the rural areas who are singing songs, who are composing lyrics and lullabies every day. Are they not writers? Do they have access to the digital medium which is worldwide? The answer is very, very obvious. So a slogan which says digital and its innovation and technology that will bring gender equality is a good idea, but somewhat limited in the context in which we are speaking. So I would certainly like to urge all the writers, publishers, and the supporters of Indian literature in all its languages that the digital medium is powerful, but let us help our sisters from less advantaged backgrounds, our writers from languages that are not major and visible, to approach that digital platform if possible, and not to hold this as the only ideal
of excellence or outreach and pertinence. So that's one. A second point that I want to make has to do with the whole idea of the role of the woman writer. I think when we're talking about poetry, I strongly believe that poetry has the ability to heal. Not only the personal healing, अभी नसीरा जी कह रही थी कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है about domestic violence, about women and their situations and their space where they experience humiliation. There are squabbles and quarrels within smaller communities that come out in poetry. It's all right, because these are instruments of healing, where women poets talk about their identity, about their experience. But I also agree with our earlier speakers that the canvas is vast. The same women poets are also capable, and they do, talk about community, injustice, social reform movement, as आपने directory की बात की. And therefore this woman's voice is a very, very large range in poetry. So when I talk about poetry as healing, it's not only healing of mourning and grief and hurt and humiliation in our everyday lives, but healing society. Because I strongly believe that women are the leaders of any kind of healing that can happen in society globally. Whether we are talking about the deprivation of women in political conditions such as Afghanistan, we are talking about the war terrain in Ukraine, we are talking about refugees out of Myanmar. It is the woman poet, the woman speaker, the woman leader who will bring about that healing. I believe that very strongly. I'll end my remarks by referring again to Adit Kaurji, when she said that there is no necessity to label women as women writers. I will modify that somewhat by referring to an image that I deeply value, and that's of the Ardhanarishwar, where men and women have to function together with a sense of equality and mutual respect. And I completely agree that there is no reason for women to be strident, to be power-driven in the sense that you have to put down the category of men. And this is where I've always written about this also, that the history of the feminist movement in India is very different from the history of the feminist movement in the West. Here, if we look back, particularly to the 19th century and the social reform movements, there were men leaders of the women's movement. Raja Ram Mohan Roy, Vivekananda, Sharad Chandra, Rabindra. I mean, the list can go on and on with an erudite audience like I have today. I don't need to give you a reminder of the role that men leaders played in bringing women to the forefront and changing the laws and the policies that would be supportive of women. Equally, there were women writers, women leaders, women poets. Sarojini Naidu is what I consider as the forerunner and the foremother of Indian feminism. So with that kind of a history, let us not make the mistake that has been made in some other societies, that it is man versus woman. Feminism is not that. Feminism is woman and man together. Nevertheless, it is important to hear the woman's voice because it has been silenced for too long. And I'm absolutely delighted and deeply honored to chair this session, which has women's poets expressing their voices in their own languages. This multilinguality of India is to be greatly revered, and this is the best privilege that any of us can have, to hear our sisters in their own language speaking about the experience of life, learning and society, whatever they consider to be the priority in their literary thinking. So with those words, I would invite our speakers to read their poems, and just a little eye on the watch. So if each person could take about 5 minutes, we will still be able to finish by 1:30 and maybe have a few minutes before that for an interaction with the audience, which I think is very important. Thank you so much, ma'am, for defining the word very feminism or feminized poetry. Thank you so much, ma'am. Before that, may I request most respectful Dr. K. Srinivasarao to kindly
honor the chair of this poetry session, Professor Malasdeep Lalji. Sir, thank you very much, sir. May I also request you to kindly honor the invited poets for today's poets meet from Ratrottama Dasji from Assam. Okay, right. Yeah. Thank you very much, sir. Now with the permission of the chair, may I call upon Dr. Ratrottama Dasji. She is an Assamese writer and scholar and presently working as an associate professor in the Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, Delhi University. She has 3 critically acclaimed published books to her credit, besides her regular published columns in newspapers, literary journals and magazines. Her novel Segum Pator Purhi has adapted as an Assamese TV serial under the same name, with more than 100 episodes being telecasted. She is the recipient of Travel Grants Cream of Sahitya Academy and prestigious state level recognition by Jeevan Gowati. Namaskar to one and all. Without taking much time, without observing much formalities, I go directly to reading my poem. I write in Assamese and English. Non-fiction, I prefer to write in English, and fiction, always in my mother tongue. Poem, of course, in my mother tongue. So this poem is also originally written in Assamese. I have got only one poem prepared because of the time, and the English translation is also there. It's a short poem. I hope you will enjoy. I hope you will love listening my mother tongue, my first language, that's Assamese. Title is Erit Hoi Kahani Heuzia Maya. The loose translation is Chorke is Hare Khas Ka Maya, living the Maya of the green willow. I could not translate the word Maya. I don't think it's possible. In this poem, it's not exactly illusion. Another word I could not translate in the poem, that is chadar. Chadar is chadar only. It cannot be sheet or something else. Born Mayamon, a Hemeka Hamor Sador, Heuziare, Ati Ati, Bati Tobokose, Dubori. Kulitoi, Niorone, Demon Tosizam, Matironi, Horapatu Nazaribo, Kami Haror, at a Sonoka Hoza, Matmor Maratibo, Borokunor Bukosat Uti, Usizam, Gateway, Harmony, Heuziamaya.
আৰু আকাশ যেতিয়া মুকলি হ'ব মোৰ কণমানি উৰুৱাব ৰঙা চিলা বতাহ হৈ পৰিব I would just like to read the English translation. It's by me only, so please pardon me if it is not up to the mark. And if my Hindi or my English is not up to the mark, that means my mother, I know, and one more language. And maybe I'm expert in that language. Anyway, my translation is leaving the Maya of the green meadow. Attachment is thy name, O moist chadar of grass, O green mellow meadow. The greenery conspires to enchain me. The meadow is a drape to tie me. But even the amber foliage of fall will never know that I will drift away, putting off the calf of dew. Only a case made of my rib case will remain. It will murmur in pain. I will live, riding on the horseback of rain, leaving all attachment of the green chadar, leaving the Maya of the green meadow, the mellow meadow. And when the sky will clear, and when it will turn crystal blue, and my little one will run a red kite, I will be the gentle wind, I will be the bridge, I will swing and grab. Thank you. Thank you, that was very beautiful. Saying I'm old, I want rest. Thank you very much for the very moving poem and also for bringing up the issue of translation. Because Maya and Chalu to also think about, and I'm sure with the other writers also, such issues about translating poetry will come up, and that's a very valuable point. Please, Next from Bengali, Trina Chakravarti ji. Dr. Trina Chakravarti ji is a Bengali writer and a regular contributor of poetry, short stories and essays in different magazines in Bengal and Bangladesh. She is also one of the editors in leading Bengali literary magazines, Yapan Chitra. She has a 6 collection of poetry and 1 edited book to her credit. She has translated Afghan poetry, Australian poetry in Bengali for literary magazines, and her work has been translated into English and Hindi for various magazines. She is presently working as a publishing company as a senior editor in India. Thank you for this nice introduction, and I would like to thank Shark Academy for organizing this wonderful program and for inviting me. Thank you for having me here. So, the first poem I will read in Bengali, and then I will try to read in Hindi Anubad. The Hindi Anubad is done by Amrita Vera ji, so my sincere thanks to her. ভুল বোঝাবুঝি থেকে একটা নৈকট্য হয়েছিল, ঠিক বোঝাবুঝি থেকে একটা দূরত্ব। আমার সংগ্রহে এরকম অনেকগুলো দূরত্ব আছে। মেঘলা ছুটির দিনে আমি দূরত্বের বাক্স খুলি, লম্বা একটা স্কেল দিয়ে দূরত্বগুলো মাপি। আমি দেখেছি দূরত্বগুলোর প্রাণ আছে, প্রতি বছর তারা 2-3 ইঞ্চি করে বেড়ে যায়। মানুষ একটা সময় পরে আর দৈর্ঘ্যে বাড়ে না, উচ্চতার মাঝে মাঝে বাড়ে ও কমে, সেসব কিছু নয়। তাই তাদের ঘরবাড়ির একটা নির্দিষ্ট মাপ থাকে। দূরত্বের বাক্সের কোনো নির্দিষ্ট মাপ নেই। এ নিয়ে ভারী মুশকিল হয় আমার। ক্রমাগত বাড়তে থাকা দূরত্বের মধ্যে বসে আমার ছুটির দিন ক্রমশ ছোট হয়ে আসে।
शीर्षक है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा कोई धर्म नहीं, बल्कि धर्म ही शायद आत्मरक्षा सिखाती है। ये सोचते सोचते पहले पार की नदी, फिर धारा, उसके बाद पानी के सभी समीकरण, कवच उतार रख दिए, अस्त्र, पोशाक, परिचय उतार फेंके, और तुम्हारी असीम प्रज्ञा के आगे उतार कर रख दिया धर्म, और तुम्हारी असीम प्रज्ञा के आगे उतार कर रख दिया धर्म। मुझे और आत्मरक्षा की जरूरत नहीं, मुझे और आत्मरक्षा की जरूरत नहीं। दूसरा शीर्षक है लापता। कैसे शिनाख्त करोगे मुझे? खास कोई भी निशान मौजूद नहीं है, जैसे माथे के नीचे कटी का निशान। जिस रास्ते से हर रोज तय करती थी कुछ दूरियां, उसकी कोई तय लंबाई नहीं है। एक पेड़ के पास जाकर रोज बातें किया करती थी, लेकिन उसकी कोई याद बची नहीं है। अविरत जिस बारिश में खड़ी रहती थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। कैसे शिनाख्त करोगे मुझे? तथ्य के नाम पर कुछ साधारण से सपने हैं और छायाहीन विच्युति की बातें। इन सब मामूली बातों के बीच खो चुकी तालिका में जमी हुई चुप्पी से कैसे शिनाख्त करोगे मुझे? और किस तरह भला चिन्हित करोगे मेरे ना लिए वो कदम जो लेने बहुत जरूरी थे? नेक्स्ट इज दूर की बातें। एक समय छत पर खड़ी हो सोचा करती थी दूर की बातें, अब दूर से छत के बारे में सोचती हूँ। एक समय छत पर खड़ी हो सोचा करती थी दूर की बातें, अब दूर से छत के बारे में सोचती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता जब देखती हूँ पत्तों को उड़ते, देखती हूँ जमी हुई है धूल रेलिंग से झुकने वाले दिनों में। मैं हमेशा से दूरी ही चाहती थी और छत पे लौट आना चाहती थी कई बार। आसपास बहुत से घर हैं। टेलीफोन के बगल से गुजर गया एक सहज दिन। आड़ी तिरछी सुनसान सड़कें जगी रहती है सारा दिन। सब कुछ देखती हूँ दूर से, सोचती हूँ छत के बारे में दूर से। छत पे खड़ी हो कभी सोचा करती थी दूर की बातें। शीर्षक है पिकासो जानते थे। बहुत से चौकोर डिब्बों के बीच से ही एक इंसान ठीक से नजर आ सकता है। पिकासो जानते थे। तुम जानते थे कि सरल रेखाएं ही हमारी नियति है। दरअसल हर रास्ते का मोड़ सरल रेखा ही है। हम बेवजह बार बार टर्न लेते रहते हैं। मैं जानती थी वृत्त जहां से भी शुरू करूं लौटना होगा एक ही संभावना पे। हमने सोचा था आईना ही एकमात्र सच है और सच एक रिफ्लेक्शन। आजमाने पर एक दिन जाना, यदि ठीक से तोड़ दिया जाए तो आईना असल में एक हथियार है। थैंक यू। Thank you very much. Very powerful poems, and the personal voice, maybe we'll have time to discuss about that later. Shall we move to the next person? Next, from Gujarati, we have Chaya Trivedi ji. I'm sorry, from English, we have Lakshmi Kannan ji. She is a bilingual writer who writes in Tamil and English. She has 27 published books till date that includes novels, collection of poems, short stories and translation. She has published extensively her essays on gender issues,
on the art of translation and politics of language. She was a resident writer at the International Writing Program, UA, USA, and Charles Wallace Trust Fellow at the University of Kent, UK, and many others. She taught English on the faculty of colleges in Kolkata, Delhi, and in IIT Delhi before she joined an MNC as a senior writer and language coordinator. Thank you so much. I thank the Summit Academy for inviting me, and I thank them both for giving me the opportunity to hear so many of you and vibrant poetry. And like Professor Manshilal gave us a head start, we had to work with harmony, and it's easy. For me, I think I'm here because of Mahakavi Subramani Bharatiya, whose poems inspired me when I was a primary school girl. Not even so aware of my girlhood. I was competing all the time with the boys on the athletic field. But then he said, you are a pen to my pen and a womanhood in you and all that. So we owe a lot also to men to support us. I'll read two poems today. One is a short one and it needs a little bit of introduction. It's on river Saraswati. And there is a term called photomology, which is a scientific study of rivers when they become rock structures. And this science uses another word called tectonic, which means these trusts of soil that becomes solidified. This is the river Saraswati. You call the invisible river Saraswati, for you quietly and obtrusively joined Ganga and Yamuna in Prayagraj to form the Triveni Sangam. People throng to take a dip in your waters with unshaken faith that your waters will bathe. That time, you disappear under the earth due to tectonic disturbances. However, neither photonology nor the people gossip traveled. Above the soil you rose as a very tangible goddess, Saraswati, invoked by all your devotees, students, writers, musicians, dancers, painters, you flow on within their tapestry. Second one is a more disturbing poem called The Snake Woman, about a very stubborn, this thing that I don't need to tell you about the self-fixation. The fixation in a family is that a woman has to give birth to a son, give birth to a boy. And this is very pronounced in the southern states of India. I come from Tamil Nadu and Karnataka, where they do Naga Puja. And this Naga Puja needs a little bit of introduction. A pregnant woman with her child is sent to worship stone-sculpted snakes in temple for Naga Puja, and she observes very strict rituals of fasting and giving up snake gold and everything and all that, so that she has to get this male child. And the second one is about, you see, like in the same listing, Yajna Pavita is a word that I have used, that this is a sacred ceremony. This poem features a mother and a daughter. She was deeply into Naga Puja, her pregnant mother, punishing rituals, fasting, special prayers on Shashti, abstaining from eating snakes, regular visits to temple snakes sculpted in stone, where she took her place on 18 feet with long, pure women sent by their in-laws to beg. Oh, king of cobras, please grant me a male child. I will name him Nagaraja, the king of cobras. The tension ate into her vitals. She gave up wearing nice sarees, she had a pile of them. She shunned jewelry, she was given a huge gift by her mother. And she stood out like a renunciant in a minimalist attire, in weddings, government palitas, namakarams. Mother had a nocturnal experience, unbeknown to her family. Night after night, she got the same dream. A female baby cobra visited her in her dream
wearing chuki and a jewel girdle around its slender neck, the red dot shining on its brow. Mother watched, fascinated, yet fearful. The baby cobra moved her head sideways, slithered close to mother to whisper in her ears, "I'm coming, wait for me." Petrified, she didn't share it with anybody. Mother got a girl. "Oh, just look at this sunshine baby," cooed her mother's mother, keeping a doggy coal on the baby's left cheek to ward off the evil eye. We'll call her Nagalakshmi. "It matters little what you call her," said her father's mother in a gravelly voice. "Now that your daughter didn't get a son, a Nagaraj, she can have any name who cares." The baby smiled at the intransigent woman who did not smile. Naga was eventually dropped to modernize her name. She grew into a girl who wondered why her mother, who made so much bespoke jewelry, never wore anything with them. Mother shared a secret dream. Her Naga Puja was resumed most stringently than before, and a boy was born. He was named Nagaraja. He hissed at his mother, who fed him. He bayed his fangs at his father and spewed venom on his sister. But the girl grew into a snake, slowing off her dead skin every few years in the jungle, fending off predators, rapists, Me Too vampires. She outgrew herself and slid out of her skin, each time to emerge with a new, lustrous one. Mother thought at her several times strategies. "You know something?" she told her daughter. "I have a second secret to share. I never got a single dream about a cobra when I was pregnant with your brother. Strange, isn't it?" Thank you. Thank you, Lakshmi, for those marvelous poems. And I just want to sort of push a point at this juncture to say how rich the mythology is. When you talk about Saraswati and you talk about the Nag worship and the desire for the sun, I mean, these are so culturally coded. But in India, fortunately, these myths transit from one language and one culture to another quite readily. The sun preference, for instance, is quite widespread. And the worship to gods, to get a sun, and all that sort of thing. So, this is for the poets. And maybe I hope we have time for the discussion as to how much of this cultural coding is possible to put into your poem directly, or does it need a little explanatory note? I'm actually not against explanatory notes at all. I think it is sometimes necessary to give mainly for other cultures. I think this Nag Puja is for southern states. To the best of my knowledge, maybe you can take. So I shared it. It's important. And Saraswati, you would agree, needed more time. So thank you very much. And these are points that we all share about creativity, and I hope the session, the beautiful poems of the poets, encourage us to think about the creative process itself for each of you. So we can move on to the next. Next, from Gujarati, we have Dr. Chaya Trivedi ji. She is a Gujarati poetess, translator, compiler, anchor, actor, and journalist. She has 11 published books to her credit, including translations and compiled books beside published poems, short stories in prestigious compilations, magazines, and newspapers. She took part in Gujarati and Sanskrit plays and won various prizes, as well as recited poems, talks at All India Radio and Doordarshan. She served as a senior journalist in various medias like Divya Bhaskar, Sambhav Media, Akhila, G News, Gujarati, etc. As well as worked with the government of Gujarat projects like Vanche Gujarat Abhiyan, etc. Thank you very much. Thank you very much.
उपस्थित सभी को होली और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं गुजराती में एक अपनी कविता पठन कर रही हूँ और उसके बाद हिंदी अनुवाद जो मैंने ही प्रयत्न किया हुआ है। नेति नेति एक શાપિત પરી કેદ છે ના એ બેડીઓમાં જકડાયેલી નથી કે નથી પાંજરામાં પુરાયેલી આમ છતાં કેદ તો છે જ છે કારણ કે સતત તે સાથ પાડ્યા કરે છતાં કોઈ હુકારોય ભણે નહીં હાથ ઉછાળીને તાલી આપ્યા કરે છતાં સામે કોઈ હથેળી ધરે નહીં તેના ફેલાયેલા હાથ વિંઝ્યા કરે છે હવાને છતાં सामे कोई आलिंगन करे नहीं ते वरी छे अदृश्य अंधत्व ने खुली आंख होवा छता सामे जोवानुं कशुं नहीं परी पासे पांख तो होवानी ज परंतु ते उड़ीने जाए क्या खुला फाट असीम आकाश नीचे अफाट धरती पर ते केद छे अहम ब्रह्मास्मिनुं अट्टहास्य करता दानव सामे तेनु अस्तित्व होवा छता पण नथी 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 नेति नेति नेति। इसी कविता का हिंदी अनुवाद में पढ़ूंगी, जो मैंने ही किया है तो क्षमा याचना पहले से कर लेती हूँ। नेति नेति कैद में है एक अभिशप्त परी, वह जंजीरों से नहीं बंधी हुई, ना ही कैद है पिंजर में कहीं, फिर भी वह अधीन है क्योंकि वह पुकारती रहती है मगर सामने गूंज नहीं उठती। वह तत्पर है ताली देने को परंतु सामने हथेली नहीं मिलती। बाहें पसारती रहती है हवा में और आगोश में उसके कुछ भी नहीं। आंखें खुली फिर भी देख नहीं पाती, अनदेखे अंधापन से घिरी रहती। आंखें खुली फिर भी देख नहीं पाती, अनदेखे अंधापन से घिरी रहती। परी के पास पंख तो होते ही है लेकिन उड़ान भरकर वह जाए कहाँ? खुले आसमान के तले असीम धरा के परे वह तो अधीन है। अहम ब्रह्मास्मि का अट्टहास करते दानव के सामने परी का अस्तित्व होते हुए भी नहीं है नहीं है नहीं है नेति नेति नेति। दूसरा एक अनुवाद है प्यास, हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर रही हूँ। एक मछली बहुत है प्यासी, एक मछली बहुत है प्यासी, उसके लिए जल यानी जीवन सही, अपितु उससे प्यास नहीं बुझती। एक मछली बहुत है प्यासी, पानी के बीच रहते रहते भी उसे नहीं पता खुद कितने पानी में है। पानी के बीच रहते हुए भी उसे नहीं पता कि वह खुद कितने पानी में है। जल बिन नहीं, जल में ही वह छटपटाती रहती। जल बिन नहीं, जल में ही वह छटपटाती रहती। जल में पंछी की परछाई जब जब देखती उसे लगे कि बादल से प्यास बुझती होगी। मिट्टी में उगी फूल पत्तियां देखे तो उसे लगे कि शबनम से तृषा छिपती होगी। अफसोस, मछली न तो उड़ पाती और न तो उड़ सकती। विषाद में छोड़ती रहती गहरी सांसें और पानी में उठने लगते बुलबुले। पंछी, पुष्प, इंसान सब सोचे कि मछली के शब्दकोश में प्यास शब्द के साथ, मछली के शब्दकोश में प्यास शब्द के साथ एक मछली बार बार डुबकी लगाती रहती है तृप्ति पाने को, प्यास बुझाने को। अंत में एक गजल पेश कर रही हूँ। दरवाजे खुले हैं, जब मन हो तब आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। जब मन हो तब आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। दोस्त दीवारें न साथ लाओ, दरवाजे खुले हैं। जब मन हो तब आ जाओ, दरवाजे खुले हैं। दोस्त दीवारें न साथ लाओ,
कभी सांस में अटकती, कभी फूंक में बहती, सिर्फ हवा की तरह लहराओ, दरवाजे खुले हैं। अभी ये हमारे गुजरात में संत कवि नरसिंह मेहता हुए, उनका ये संदर्भ इस शेर में मैंने लिया है। कितने जन्मों का है उधार क्या पता, कितने जन्मों का है उधार क्या पता, राग केदार भी कोई गाओ, दरवाजे खुले हैं। एक रजकण एक पंख या फिर आ जाए तो आएगा आसमान सारा, दरवाजे खुले हैं। अंतिम शेर है, छोड़ने की बात सरल पर सच में छोड़ पाना मुश्किल, छोड़ने की बात सरल पर सच में छोड़ पाना मुश्किल, प्रश्न पल भर का जा सको तो जाओ, दरवाजे खुले हैं। छोड़ने की बात सरल पर सच में छोड़ पाना मुश्किल, प्रश्न पल भर का जा सके तो जाओ, दरवाजे खुले हैं। Very powerful and quite evident that you are into theatre. Thank you. Now we have Professor Soma Bandhopadhyay ji, representing both India and as well as Bengali. She is working as a Vice Chancellor, Baba Saheb Samman, Bhasha Samman from Ministry of HRD, Rajbhasha Gaurav, World Peace Award, Professor Kalyanmal Lodha, Sikshak Samman, among others. Very respected Nasira Shinha ji, Admi Ami Joshi ji, Chairperson of the session, Professor Dr. Rabindra, all eminent, renowned poets present here, and dear audience. Very good afternoon to all of you. And thanks to Sahitya Academy, especially Ravji, for making me part of this coveted forum. Madam, मैं पहले क्योंकि मैं हिंदी में भी लिखती हूँ और कभी कभी शायद अंग्रेजी में भी, लेकिन आज मैं पहले बांग्ला पढ़ूंगी, उसका एक ट्रांसलेशन पढ़ूंगी, उसके बाद फिर जो बांग्ला का आस्वाद है वो ओरिजिनल है। The title of my first poem is Organises. কত কবিতায় যে রান্নাঘরের তাকের উপর রাখা কৌটোগুলোর মাঝে মাথা ফুটে মরে সেই সদা ব্যস্ত সাধারণ ঘরের বউটি কে বা তার হিসেব রাখে? যখন বসতে বসে শব্দ কতই না, দুটি হাত করিবে রাঙা হয়ে ওঠে, কলম তুলে নেওয়ার জন্য ছটফট করে ওঠা আঙুল পরক্ষণেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে উঠলো উঠতে, অথবা দক্ষতার সঙ্গে মাখতে থাকে আটা। মনের মধ্যে উঠোনের মতো উঠে আসা কোমল সুন্দর কত শব্দ মুহূর্তের মধ্যে মশলার সঙ্গে মিশে যায় সেই নয়। ডাল তরকারি রাঁধতে রাঁধতে অস্থির মধ্যে বউটি সৃজনের ব্যাকুলতায় ছটফট করতে করতে ভাবে কেমন হবে আমার কবিতার শেষ টুকু, কবিতার মন ঘরের মধ্যে। তবুও ফ্রিজ খুলে টমেটো বের করতে করতে হঠাৎ মনে হয় না কবিতার জন্য বেছে রাখা সুন্দর অসাধারণ সব শব্দগুলো মন থেকে পিছড়ে গিয়ে কখন জানি ফ্রিজের মধ্যে রাখা দইয়ের বাটিতে জমে হয়ে গেছে। আর এখন দেখো এইভাবেই সকাল দুপুরের উপর সন্ধ্যে একটি পুরো কবিতা লেখার আশায় সে নিজেই একটি অসম্পূর্ণ কবিতা হয়ে গেছে। ट्रांसलेशन। अधूरी कविता। कितनी कविताएं रसोई की ताक पर रखे डिब्बों के बीच प्राण त्याग देती है, हाँफते दौड़ते उस आम औरत की कौन जाने। जब करने बैठते हैं शब्द कितने ही दो हाथ हंसी के रंग से बन जाते हैं। कलम उठाने को छटपटाती उंगलियां तरकारी काटने में हो जाती है, या फिर कुशलता के साथ उठती है आटा। मन में उठते बुलबुलों की तरह सुंदर कोमल शब्द, मन में उठते बुलबुलों की तरह सुंदर कोमल शब्द मसालों के पेस्ट के साथ पिस जाते हैं। दाल सब्जी बनाती अस्थिर चित औरत हैरान परेशान पर सृजन की अकुलाहट में छटपटाती सोचती है कैसा होगा मेरी कविता का अंत, कैसा होगा मेरी कविता का अंत। कविता में मन, मन में कविता।
कविता में मन में कविता, फिर भी फ्रिज खोल टमाटर निकालते निकालते अचानक टटोल कर देखती है। न जाने कब कविता के लिए चुने गए एक से एक बेशकीमती शब्द मन से फिसल कर फ्रिज में रखे दही के बर्तन में फ्रिज में रखे दही के बर्तन में जम चुके थे। और जब देखो इसी तरह रात दिन दिन रात एक पूरी कविता लिखने की चाह में वो खुद ही एक अधूरी कविता बन जाए। The second one is Lodi. আমি তোমার সখী নদী হয়ে বয়ে যায় যেন সবুজ ঘাসে দেহ ঢাকায় বেদনায় বন স্তব্ধ মাধুরী রাতে অসুরক্ষার মালা খুলে ফেলে এক দৌড়ে ধরে ফেলে আমার আমি নদী হয়ে বয়ে যায় যাতে গভীর শূন্যতার চক্র হয়ে ভেসে যাওয়া এই অগ্নিবন্ধ শহরে প্রতিটি উত্তাপকে সরিয়ে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে পাখিরা কোনো এক গ্রামে নিশ্চিন্ত সবুজের আশ্রয়। আমি নদী হয়ে বয়ে যাই যাতে অঘ্রাণের প্রৌঢ় রোদ নিঃসঙ্গতার চাদর খুলে শিশিরের আলপনা দীর্ঘ পথ বয়ে যেতে যেতে সময়ের তাপ আমার দেহে তার চিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়। আমি ক্লান্তিতে বুড়ি ঠাকুমার চশমার মোটা কাছে ঠান্ডার সকালে ভিজিয়ে নিয়ে আমার শরীর। তারপর হঠাৎ আমার যাত্রা শুরু করবো, ঠিক তখনই তুমি এসে আমার দুহাতের মুঠোয় ভরে দাও নক্ষত্রে ভরা একটা গোটা আকাশ। আর আমি বসে ভাবি এই আকাশ আমি ভাগ করে নেব কার সাথে। ट्रांसलेशन नदी, मैं तुम्हारी सखी नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि हरे घास पे तन ढकता ये मधुमय पन असुरक्षा की माला उतार में दौड़ कर मेरी उंगली पकड़ ले स्तब्ध माधुरी रात। मैं नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि अथाह शून्य के घेरे में दिल जला के शहर के हर ताप को बुझाकर पंख फैलाए जा बसे परिंदे गांव के हरियाली आंचल में। मैं नदी बनकर बह जाती हूँ ताकि अगहन की प्रौढ़ धूप निस्संगता के अंधकार में विषाद के चादर उतार कर शिशिर की रंगोली बनाने लगे। विषाद के चादर उतार कर शिशिर की रंगोली बनाने लगे। दीर्घ पथ बह जाते जाते समय का ताप मेरे देह पर अपनी छाप छोड़ जाती है। मैं थक कर बूढ़ी दादी की चश्मे के कांच में सर्द सुबह भिगो लेती हूँ अपना शरीर। फिर यात्रा शुरू करूँ कि तुम आकर मेरी दोनों मुट्ठियों में भर देते हो तारों से भरा एक पूरा का पूरा आकाश। और मैं सोचती रह जाती हूँ ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ, ये आकाश मैं बांटूं किसके साथ। Very beautiful poetry, and Bengali is my mother tongue, so I thoroughly enjoyed it. It's real to put the phrases in Bengali. But this business about the sky, we all know that there's a saying that women hold up half the skies. I think we should ask why not the whole sky. Thank you, ma'am. Next, it's a turn of Miss Swati Sharma ji, representing Hindi. She's a communication specialist and a new media entrepreneur. She has worked with international organizations in New Delhi and extensively traveled and worked in US and Europe as a business communication manager. Her works of poetry, articles and criticism have been published in leading newspapers and magazines of India. Poetry is an attempt for her at consistently and ruthlessly telling the truth. Thank you so much for such a great introduction, and I must say that I am so honored to be present in such an august company here, and I'm enjoying thoroughly all the poems, and I'm so glad that you all got translations. Without much formalities, I will proceed with my poetry. First title is पहला शीर्षक है सोलो ट्रिप पर जाती सखी।
जाना तुम सुदूर छोटे से गांव, जंगलों नदियों पहाड़ों में फिरना, अनार के पेड़ से तोड़कर पत्तों को सुनना, रात को बिजली कट जाने पर तारों के नक्शे बनाना, बारिश की आवाज के नीचे सोना, जानवरों की आवाजों का भय रखना, इंतजार करना सांस रोक कर सुबह बनेगा, झुंझलाना मेघ आच्छादित आकाश पर, सूरज के नदारद होने पर, सिर्फ चाय और घर से लाए अखरोट पर पूरा दिन गुजारना, पास की झोंपड़ी की रसोई में जाना, उस घर की औरत से सेक मांगना और उसकी आग पर अपनी जैकेट सुखाना, या जाना तुम दूसरी भाषा बोलने वाले बड़े से क्रूर शहर में, जहाँ सड़क पार करना झुंड के साथ और दूसरी ओर अकेले खड़े होकर मैप में म्यूजियम वाली सड़क ढूंढना, सबवे रेल के डब्बे के कोने में बैठी रोती औरत के पास जाकर चुपचाप बैठ जाना, पानी या शब्दों से प्रयास मत करना, औरतें समझ जाती हैं एक दूसरे को भाषा के बिना, डरना सुनसान गली में शाम, डर और बटुए को खोस कर अंदर की जेब में रखना, पुरानी किताबों की दुकान पर कॉफी पीना धीरे धीरे, शराब पीकर होटल का रास्ता भूल जाना, कॉफी बनाने वाली लड़की से पूछना अगर वो चल सकती है तुम्हारे साथ होटल तक, उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद, या जाना तुम समंदर किनारे छोटे से टापू पर, अगर तैरना न भी आता हो तब भी कूद जाना समंदर में, मछलियों को दाना देने के लिए, अपने इंस्ट्रक्टर का हाथ न छोड़ना या छोड़ भी देना कुछ समय बाद, गहराई से घबराना, बहुत घबराना, स्कूटर किराए पर लेकर बाजार की गेड़ी लगाने निकल जाना शाम को, वापस आते हुए अंधाधुंध बारिश में एक पुल पर फंस जाओगी शायद, कुछ मोटरसाइकिलें पीछे लग जाएंगी तो टोल टैक्स वाले बूथ में बैठी महिला से बतियाना पूछते जब तक वो लड़के बोर होकर न चले जाए, रुक जाना सड़क के किनारे, गिनना फर्श के इर्द गिर्द कितने पेबल्स लगे, गहराइयों ऊंचाइयों का अनुमान लगाना, सब लोगों के दांत खराब क्यों, बच्चों के चेहरे उदास क्यों, फल वाले ने क्या क्या चखा, बातें करना, बिल्कुल चुप रहना, ठहरना, चलना और ज्यादा ठहरना, खूब खाना, खूब सोना, टूरिस्ट बनना या ट्रैवलर बनना, सूर्योदय सूर्यास्त देखना, डरना, खूब डरना, साहस में कोई यश नहीं, धरती के ओर छोर सब नाप डालना, सब करना मेरी सोलो ट्रिप पर जाती सखी, पर अकेले जाने और अकेले रहने का फर्क खुद करना। क्या अगली प्रस्तुति एक है, उस विधा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। मुखरी या कहीं मुखरी कहते हैं, मुखरी होती है तो अवधि में चली जाती है, अवधि में लिखा जाता है, ये संवाद होता है, इट्स अ डायलॉग जिसमें नायिका अपनी सखी से बात कर रही है और एक वो सिनेरियो बिल्डअप करती है और आखिरी लाइन में, इसीलिए मुखरी फन के लिए यूज़ होता है, कैजुअल के लिए यूज़ होता है, सटायर के तौर पर यूज़ होता है, बहुत तरीके से मेडिकल सेंचुरी की विधा है, पर आजकल मेरे जैसे कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं नई चीज़ों के साथ। सुबह सवेरे गरबा लगावे, श्याम वरण तिस कामों के भावे, कुछ कारज जाबिन न सुहावे, तिस बिन प्रेम मिले ना माफी, क्यों सखी सजना ना सखी कॉफी। हंसी ठिठोली ठट्ठा तिस दिन, घट मोरा निर्घूंघ तुम बिन, कुमति निवारो संभाव से छिन छिन, मति के पात उघाड़ो प्रियतम, क्यों सखी सजना ना सखी कभी। पाखंड माही मति धरे, प्रेम या भूल न ज्ञान पड़े, पर ना बोलत कबहू न डरे, पल्ले पड़े कानून न गवर्नमेंट, काय सखी सजना ना सखी कौन से। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली पेशकश है मेरी एक हिंदी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो उसमें
पाकिस्तानी आती है, तो ये गज़ल पढ़ना चाहूँगी आप सबकी इजाज़त से। ना उम्मीदी ना परस्ती बेखुदा देता है, क्यों कहूँ झूठ के इंतज़ार सिला देता है। ना उम्मीदी ना परस्ती बेखुदा देता है, क्यों कहूँ झूठ के इंतज़ार सिला देता है। कैसे रखती मैं तरोताज़ा बहारें अपनी, वक्त हर बाग के फूलों को खिला देता है। बुझा सूरज है इधर चांद भी आता होगा, बुझा सूरज है इधर चांद भी आता होगा, बेरहम शाम की बिरहा का पता देता। मुंतज़िर ज़ात के हैं, सब्र है साथी हरदम, चेहरा आईना है सब हाल बता देता। जरा बैठो चले जाना तुम्हें क्या जल्दी है, जरा बैठो चले जाना तुम्हें क्या जल्दी है, मुड़ के आता नहीं इंसान जो जुबान देता। गैरों की बात है और संग दिल होना उनको, गैरों की बात है और संग दिल होना उनको, मज़ा अक्सर देता होगा तुम्हें क्या देता। हाकिम शहर तेरे नुस्खे मुबारक है बड़े, हाकिम शहर तेरे नुस्खे मुबारक है बड़े, जब नहीं देता कुछ तो नाम खुदा देता। जिरह किस बात की जिरहा है किस ख्याल पे, जिरह किस बात की जिरहा है किस ख्याल पे, अब तेरा हर लफ्ज़ तेरी बात छिपा देता। Wonderful and a very good example of experiment and innovation in poetry. Next, it's a turn of Miss Sunita Reneji, representing Kashmiri Bhasha. She is a poet, thinker and philosopher. She has a published poetry collection to her credit, besides several poems in national and state level magazines and newspapers. She has participated in panel discussion and many talk shows on television and radio. She acted as in a few documentaries for Doordarshan and anchored many programs in Doordarshan Urdu, All India Radio, etc. She is the recipient of Motilal Shaikh Memorial Award, Surinder Pandit Soj Samman, etc. कश्मीर से हूँ तो थोड़ा सा आप सबको मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो 30-32 साल पीछे आप लोगों को ले जाना चाहती हूँ। थोड़ा सा जो भी का माहौल है उससे हट के मैं उस दौर में आप सबको ले जाना चाहती हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है और फील किया, महसूस किया है। क्योंकि मैं उर्दू में लिखती हूँ, थोड़ा बहुत इंग्लिश में लिखती हूँ, लेकिन कश्मीरी कम लिखती हूँ। और ये ऑलमोस्ट मेरी पहली एक नज़्म है जब मुझे कश्मीरी लिखने के लिए कहा गया था, और मुझे लगा ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है कि मैं अपने हालात को और जो मैंने देखा, महसूस किया है, उसको कलमबंद कर दूँ। गरस में इसके पिन कुरान आय के पुरन कैसी गई नज़ारा सरी उछाल, नखून पन यथवथरोम फलिस शुरतर सोम सुई घर पत इकविन मित्रोम अने क्या नचन कोई स्थना गोलान ज़मीनस में गुलशन बनायों यूता में सफरों यूता सजायों कुछ बस वहीं फल तले बस युद्धुम अक्लिवे अरमान क्या वने कम गुलजार क्या वने कम आबशार जवाब गोली सुसब्जार बुचक तरावक बचक वरान दुनिया कुछ इवानोस रात दो चुर्गिश रोजानोस फोबोस अनगुटुलित ज़नरात दो आलम गज़ान बेदर्दी सान मुल्क जवान वने क्या कम चमन फिरिक वरान बदशुरन सहारे रो अड़िन बदनसीबन यतीम नाव्यो समाज हिंददारित बदान तलवान मुएल सिंददारिशी पान मारान ख्योन चुन उचित म्योन रंग ढंग उचित म्योन बोल चाल उचित म्योन युक्ति हाल उचित म्योन अर्ची बन गई बना अर्ची गुजरे बना खत्म गई यन पहचान मैं कोशिश जीने बना खत्म गई यन पहचान मैं कोशिश जीने बना मैं इसका अनुवाद
पेश करती हूँ कि देखो मेरे घर को कैसे किया गया ध्वस्त, कि देखो देखो मेरे घर को कैसे किया गया ध्वस्त। हाय किसी ने कुछ न किया, सब तमाशा देखने में रहे मस्त। हाय किसी ने कुछ न किया, सब तमाशा देखने में रहे मस्त। बूंद बूंद खून जिसको मैंने अर्पण की, और जिसके लिए बाल बच्चों को तरसाया, वही घर कैसे मुझको छोड़ना पड़ा। क्या बोलूं, क्या दिल टूटता है, क्या बोलूं मेरा दिल टूटता है। वीरान जमीन पे मैंने गुलशन बनाया, वीरान जमीन पे मैंने गुलशन बनाया। हो सका जितना उसको मैंने सजाया, हो सका जितना उतना उसको सजाया। रहा एक ही अरमान कि एक टुक देखूं उस घर को मोड़ के। क्या बोलूं कैसे कैसे गुलजार, क्या कहूँ कैसे कैसे आबशार, क्या कहूँ कैसे कैसे आबशार। चारों ओर ऐसे सब्ज़ार, चारों ओर ऐसे सब्ज़ार, देखकर जिनको कोई भी हो हैरान, देखकर जिनको कोई भी हो हैरान। जहाँ दुनिया से लोग आते थे, जहाँ रात दिन पंछी चहचहाते थे, ऐसा फैलाया वहाँ तमस का अंधेरा, ऐसा फैलाया वहाँ तमस का अंधेरा, जिससे दिन रात सुलगते रहे, जिससे दिन रात सुलगते रहे। बेदर्दी से मारे जवान, क्या कहूँ कैसे चमन किए वीरान। बेदर्दी से मारे जवान, क्या कहूँ कैसे चमन किए वीरान। दूध पीते बच्चों के सहारे खो गए, दूध पीते बच्चों के सहारे खो गए। कोई बदनसीब यतीम हो गए, कई बदनसीब यतीम हो गए। कई माँ के वियोग में दर्द से छाती पीटते रहे, कई बाप के छिन जाने से कराते रहे। मेरा वजूद खत्म हो गया, मेरी पहचान बस हो गई। इसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ सबका हुआ तो हुआ नुकसान, यहाँ सबका हुआ तो हुआ नुकसान। रह गए सारे रोते चीखते बिलखते और पछताते, रह गए सारे रोते चीखते बिलखते और पछताते। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान। देखकर मेरा खान पान रंग ढंग और बोलचाल, देखकर मेरा खान पान रंग ढंग और बोलचाल, देखकर मेरा बदला हुआ ये हाल चाल। कुछ मुझे बंगाली कहते हैं तो कुछ कहते गुजराती। खत्म हो गई मेरी अपनी असली पहचान, कोई भी मुझको नहीं देता कश्मीरी नाम, कोई भी मुझे नहीं देता कश्मीरी नाम। Thank you. मुझे लगता है सब लोगों ने beautiful express. Thank you for taking us on a journey to Kashmir, taking up this very significant point of what was happening in the region. Thank you. Next is the turn of Dr. Sanjeevani Deshpande ji, representing Marathi. She is a contemporary Marathi writer, poet and blogger. She writes short and long format fiction as well as poetry. Her literary works have been published by leading Marathi newspapers like Lok Satta and Sanchar. Two of her e-books published by well-known Marathi e-publication esahitya.com. Recently, one of her stories was chosen for Abhivachan program organized by Marathi Society of British Columbia, Canada. She has a blog Chafa, where she writes and publishes her stories and poetry and pursued by many more than 2 lakh Marathi readers all over the globe. उपस्थित सभी मान्यवरों को Mike, please. Thank you. उपस्थित सभी मान्यवरों को मेरा नमस्कार. I come from Marathwada region of Maharashtra. This region is comparatively less developed. There are signs of progress certainly, but when it comes down to the mindsets, it is almost 40 to 50 years behind the times. Since I represent women living there,
based on their lives. I'll read 3 poems, first in English, second in Hindi, and third in Marathi. Shirshak, The Women I Know. The women I know walk kilometers for a pitcher full of water. The women I know walk kilometers for a pitcher full of water, work in fields under the scorching sun. The women I know deliver babies in sugarcane fields. The women I know deliver babies in sugarcane fields, sing melancholic prayers and sleep below street lights. The women I know bury their desires behind the patriarchal walls. The women I know bury their desires behind the patriarchal walls, gulp injustice from centuries and so on. The women I know do dishes, cook meals, serve food, iron male egos, year after years. The women I know do dishes, cook meals, serve food, iron male egos, year after years. They are groomed to be subordinates. They are groomed to be subordinates and carry forward traditions. The women I know don't know about Women's Day. The women I know don't know about Women's Day. They are just hoping to be considered as human one day. The women I know. Nowadays we see successful and independent women around us. The women who achieve their goals based on their own merit, but face criticism just because they're females. My next poem is their monologue. शीर्षक है गुरूर. हाँ मुझे गुरूर है. हाँ मुझे गुरूर है खुद के होने पर, और क्यों न हो. बड़ी पतझड़ के बावजूद संवारा है खुद को. बड़ी पतझड़ के बावजूद संवारा है खुद को. खड़ी हूँ निर्भय तूफानों के बीच में. स्वाभिमान बेचे सहूलियत न खरीदी कभी. स्वाभिमान बेचे सहूलियत न खरीदी कभी. ना ही आत्मसम्मान से प्रताड़ना किए ऊंचाइयां हासिल की. स्वयं से करती हूँ प्यार. स्वयं से करती हूँ प्यार. अहम से दूर रहती हूँ. मैं रोती हूँ, हंसती भी, खिलती हूँ, मुरझाती भी. मैं चुनती हूँ खुद को. मैं चुनती हूँ खुद को. ऐंठती नहीं औरों पर. ना ही उपकारी होने का पाखंड पालती हूँ. ना ही उपकारी होने का पाखंड पालती हूँ. किए त्यागों का एहसान जताकर. आप अनशन कहो कुछ भी. आप अनशन कहो कुछ भी. मैं जानती हूँ बखूबी खुद को. आपके नजरिए मुबारक हो आपको. आपके नजरिए मुबारक हो आपको. मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ. हाँ मुझे गुरु है खुद के होने पर, और क्यों न हो. Next one is in Marathi. It drives women for introspection. Women who are educated but somehow are tangled between society, responsibilities, tradition, and their own passion. This poem asks them what they did to the dreams dreamt during their childhood, what they did to those 1,000 desires. Have they molded themselves into someone they always dreamt of, or have restrained themselves into the cage of expectations imposed by others? बये कोनाड्यात ठेवलेलं पाठ्यपुस्तक विचारत होतं. चुकत मागत रडत ठेच काढत त्यांच्यावरची अक्षरे कोरलीस. त्यांचं तू पुढे काय केलंस? तुझ्या बाळ मुठींनी रेखलेली तुझी बाराखडी आहे अजूनही तिथे. ती वळणं, त्या रेषा, समजायला लागल्यापासून शिकलेली ती भाषा. काय केलंस पुढे जाऊन तुझं? लिहायला वाचायला शिकलीस. लिहायला वाचायला शिकलीस, पण खरंच लिहितेस वाचतेस का? बिलं, पावत्या, पोराबाळांचा अभ्यास वगैरे काही सांगू नकोस. सांग स्वतःसाठी तू त्या विद्येचं काही करतेस का? की फेकून दिलंस तिला अडगळीत आणि तिच्यासोबत तुझ्या त्या बाळ मुठीलाही. विचार स्वतःला कणिक मळताना, भाज्या चिरताना, फोडण्या देताना, उष्टी काढताना, पाठीवर दप्तर अडकवून शाळेत जाताना पाहिलेली ती आभाळभर स्वप्न. काय केलंस तू त्यांचं? इतरांच्या स्वप्नांपुढे त्यांची आवती देऊन आलीस आणि आता पाहतेस ती त्या इतरांच्याच डोळ्यांमध्ये. सांग त्या अक्षरांचं बोट धरून तू माणूस म्हणून घडत गेलीस की मोठी होऊन निव्वळ बाई झालीस. बये कोनाड्यात ठेवलेलं पाठ्यपुस्तक विचारत होते. You raised a very important question.
question about women's relation to tradition. Tradition that, as you said in your first poem, also binds the woman, teaches her to be subordinate, but also she's the bearer of a legacy. And this is a point that comes up from many of the poets and writers. So that's a point to ponder about, that, how do you reinvent tradition, to not give it up, but to position it in the direction of benefits and dignity to women. So thank you for raising those issues. Next is the turn of Miss Pravasini Mahakut, representing Odia language. She is an Odia poet and translator. She has written 13 Odia poetry collections and also translated 25 books from Hindi to Odia, including the biography of Odissi dance guru Kelu Charan Mahapatra ji. One of her Odia poetry collections has also been translated into Hindi, and she regularly contributes poems in national magazines. She is the recipient of Odisha Sahitya Academy Award, Jamkar Award, Junior and Senior Fellowship of Ministry of Culture, Government of India. सभी को होली मुबारक और इंटरनेशनल इवेंट डे पर हो रही है, इसलिए भी सबको बहुत बहुत बधाई। और क्या बोलिए कि कविता पढ़ूंगी उड़िया में, ये इसके बाद आगे ट्रांसलेशन। आसक्तिर केउ सुतारे तुमको गुंथिली, केउ सुता सुराठु स्वप्न और लुहाटुरी शब्द, एमिति सुता केउठी अछि कि से लंबी जाई पारिबो गोटिए गोलार्धरु अन्य एक गोलार्ध पर्यंत, मो स्थूल चेतनार पृथ्वीरु सूक्ष्मतर पृथ्वी पर्यंत, गोटिए अक्षररु असंख्य अक्षर पर्यंत, गोटिए आवेगरु कोटि कोटि आवेग पर्यंत। जानिछ केबे डायरी सारा काच गुंड ओ आउ किछि काच, छाती भितरे गुंड बे केते बेले खसी पडिचंती, मझी राती जानि पारेनी, केही जानि पारे कि जानिथिले कोन हेई थांता जे अनेक युवक गणे खंडे काच कैंपस रे माडी देखिली, डिपार्टमेंट टू आसिला बेले चप्पल छिनि जाइथिला ओ लाल मोर पिछा रास्ता उपरे मो पादर रक्त धार से काच से रक्त धार मो जीवन को लाल कर रखी कृष्ण चूड़ा सह आज जाए जार ज्वलंत आरक्त मुखरु उठी पारे केवे भी काच माने अंगप्रवण किंतु लोकनीय और आकर्षणीय नुहति। थरे थरे जड़े थरे नीरवता भी काच गुंड पर विच्छुरित हो जाए बगीचारे आउ खरारे चकचक कर उठे। ए चकचक चेहरा कोन अनुरक्तिर अन्य नाम, ए काच गुंड कोन बरफ झड़ू उड़ी आसी ना जल प्रपातर अक्षखंड पर पानी धार बाष्प झड़ी जाइए। पिलाठू काच शब्द कर मोर दुर्बलता खूब बेसी, काच जिनिस प्रति तार आहरी अधिक आगक हृदय को नहीं बारंबार भांगी बोली कौन काच प्रति आसक्ति थिला। काचर ऐश्वर्य नहीं मुझे गोटा पड़े ठिया हुए समय बाहर और काचरी गढ़ा ए मोर देह काच हृदय तर्पण आम बारंबार काचर धर्म काच। इंग्लिश ट्रांसलेशन इज क्लास Did you translate it yourself? No, translate by Susan actually. Okay. It's nice to know. That's really hard. Doesn't matter, go ahead. The glass we in this trade attachment, say like with you, which trade more delicate than gold and stronger than iron? Is there any such trade which can stray from one self-care to another, from my first consciousness to self-awareness, from one letter to endless letters? Do you know, now the pages of diary are painted with glass, particles, some pieces of broken glass have entered into my heart. In the midnight, I don't know where. Can anyone know 11 years back I threw this glass in the campus, my suitcase dropped and blocked, pushing out at my feet.
merged with the red road, with glass, with flow of blood, has made their life red, with the good till now. From his burning angles and blood-stained icon. Not yet rid myself. Glass is fragile, but is it not I living in captivity? Sometimes the silence of someone is scattered like the dust of glass in the garden and glitters to the sun. Is this glitter the other name of harassment? As this dust of glass flew away from the snowstorm, from the over mighty water of the waterfall, from my childhood days, I could pray long for sound of glass, made of glass, for the love of glass, because it will break the heart in future. Maybe I am so for the glory of glass. I stand outside time and man, body made of glass, heart, mirror, and me. We close again and again, quickly, quickly, and with the glass. Thank you very much. Now it's a turn of Ms. Rabindra Kaurji. She's representing Punjabi Bhasha. She's a young Punjabi writer. She has a poetry collection to her credit, which is published in Hindi translation as well. She's actively involved in compilation of Punjabi poems for the leading newspapers and journals. She has performed as a poet at the Doordarshan and All India Radio. She was the member of a review committee of the CBSE board of Punjabi book Sahitik Rang of class 9. She is the recipient of Dr. Harbhajan Singh Award and awarded by Bihar government and Anand Foundation, etc. Thank you, sir. सारियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल और एडवांस विच ही मैं सारियां नूं विश करना चाहांगी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे और कुछ निक्कियां नज़मां लैके हाजिर हुई हैं। मेरी किताब की ट्रांसलेशन भी हुए होके आई है। हिंदी के विख्यात लेखक और अनुवादक श्री सुभाष कीरत जी ने अनुवाद किया है। सो मेरे लिए बहुत आसान मैं नाल पंजाबी ते नाल हिंदी नस्म जानदा सी खुदा नहीं मिलना हमदर्द कोई इसलिए हाथ विच फड़ा दिती कलम जानदा सी खुदा नहीं मिलना हमदर्द कोई इसलिए हाथ विच फड़ा दिती कलम ते हौली जी कान विच कहा कि लिख ना मेहरबानी कई समझ नहीं आई मैं हिंदी में पढ़ रही है। नज़्म जानता था खुदा नहीं मिलेगा हमदर्द कोई जानता था खुदा नहीं मिलेगा हमदर्द कोई इसलिए हाथ में थमा दी कलम और धीमे से कान में कहा कि लिख ना समा इस तो पहला के तिड़के कुंड चों आखिरी बूंद भी रिस जाए इस तो पहला के तिड़के कुंड चों आखिरी बूंद भी रिस जाए आ किसे प्यासे दी त्रेक बुझाए समय इससे पहले के तिड़के कुंभ में से आखिरी बूंद भी रिस जाए इससे पहले कि तिड़के कुंभ में से आखिरी बूंद भी रिस जाए आ किसी प्यासे की त्रेक बुझाए। वो कहंदे औरतां दी गल हो रही है साडी बड़ा बदनाम किया जाता है कि औरतां दे ढिड च कोई गल नहीं बचती
घर की सच्चाई की है वो जानते हैं। वो कहते औरतां बहुत बोलदियां, वो कहते औरतां बहुत बोलदियां। मैं कहा जे दिल च दूंगे दफनाए भेदां दियां चिंगारियां नूं हवा दे दे। जे दिल च दफनाए डूंगे भेदां दियां चिंगारियां नूं हवा दे देण तां बहुते घर राख हो जाण। वो कहते औरतें बहुत बोलती हैं, वो कहते औरतें बहुत बोलती हैं। मैंने कहा अगर दिल में गहरे दफनाए भेदों की चिंगारियों को हवा दे दें तो बहुत से घर राख हो जाएंगे। गुर शब्द मेरे बड़े बेटे का नाम है। गुर शब्द 12 वरियां दा हो गया है अज। मैनू कविता लिखते देख कहता मम्मी मैनू भी सुनाओ ना अपनी कविता। गुर शब्द 12 वरियां दा हो गया है अज। मैनू कविता लिखते देख कहता मम्मा मैनू भी सुनाओ ना अपनी कविता। मुस्कुरा के मैं सुनाउण लगदी, सुनदा समझण दी कोशिश करदा, सुनदे सुनदे गंभीर हो जाता वो। पढ़दी कुछ कुछ डरदी, पढ़दे पढ़दे धड़कन अपनी सुनन लगदी। मैं पढ़दी कुछ कुछ डरदी, पढ़दे पढ़दे धड़कन अपनी सुनन लगदी। मैनू कविता सुन के कुछ उदास हो कहंदा मम्मा समझ नहीं आई। उसनों सुन के कुछ खुश होके शुक्राना करती। गुर शब्द मेरा बड़ा बेटा 12 वर्ष का हो गया है आज। मुझे कविता लिखते देख कहता मम्मा मुझे भी सुनाओ ना अपनी कविता। गुर शब्द 12 वर्ष का हो गया है आज। मुझे कविता लिखते देख कहता मम्मा मुझे भी सुनाओ ना अपनी कविता। मुस्कुराकर मैं सुनाने लगी, सुनता समझने की कोशिश करता, सुनते सुनते गंभीर हो जाता। पढ़ती कुछ कुछ डरती, पढ़ते पढ़ते धड़कन अपनी सुनने लगती। कविता सुनकर कुछ उदास हो बोला समझ नहीं आई। उसको सुनकर कुछ खुश होकर शुक्राना करती। बनवास तुर गया घर नूं छड्ड, मुक्ति दी तलाश विच बुद्ध बन। तुर गया घर नूं छड्ड, मुक्ति दी तलाश विच बुद्ध बन। मैं राख चों कलियां नूं भाल, खाद पानी पा करदी संभाल। मैं राख चों फुल्लां नूं भाल, खाद पानी पा करदी संभाल। उस एक दा ध्यान धर, तुर अंदर नूं बना लैंदी हां वन। वनवास चला गया घर को त्याग, मुक्ति की तलाश में बुद्ध बनने। चला गया घर को त्याग, मुक्ति की तलाश में बुद्ध बनने। मैं राख में से कलियों को खोज, खाद पानी पा करती संभाल। कभी बंद कभी खुली आंखों के साथ उस एक का ध्यान धर, अंतर मन को बना लेती हूँ। Thank you very much.
औरतें बहुत बोलती हैं और बोलना भी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ सुनाने को है दुनिया को। Let's move on. Thank you. Two more poems. Exactly. We have with us Miss Veena Shringi, representing Sindhi Bhasha. She is a well-known Sindhi writer, journalist, and senior broadcaster. She is the member of Delhi Sindhi Academy and convener of Literary Committee. She has more than 22 published books to her credit, besides more than 10 edited books. A few of her books have been translated and published in English. She has translated 3 children books in Sindhi and her works have been published in Indo-Pak magazine. She is the recipient of Sahitya Akademi's Bal Sahitya Puraskar, Sindhi Academy Award, Ram Bakshani Ishwari Bai Award and Priyadarshini Award, etc. She worked for Radio Voice of Sindh Land. परमिशन आप चेयर मैडम की, मैं अपनी कुछ कविताएं पेश करूँगी आपके सामने। और नासरा जी दूसरे सारे प्रोमिनेंट जो है डिफरेंट स्टेट से आए हुए हमारी लेखक सिंधी नववर्ष आ रहा है, चेटी चंद उसकी सबको बधाई, वुमेन डे की बधाई, स्वर्ण जयंती की जो अवसर चल रहा है उसकी बधाई। मुझे ये लगता है कि 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, हम लोग जो है झूलेलाल कलंदर शहबाज यहाँ पे जो है समझा नहीं सके हैं इंडिया में जो है। तो ये काम जो हमारे राइटर हैं उनको भी चाहिए कि सिंधी जो है स्टेटलेस है तो उनकी भाषा या दूसरा जो कल्चर है उनको समझने के लिए जरूरी कुछ है। वो शहबाज कलंदर का आपने सुना होगा, गुना लाला के समागम मस्त कलंदर बड़ा पॉपुलर है। वो अज़रबैजान से आया था शहबाज कलंदर, और ये उडेरुलाल जो हम लोग चेटी चंद मनाते हैं वो यहाँ पे सिंध का था। तो दोनों को मिक्सअप करते हैं। 75 ईयर्स में हम लोग जो समझा भी पाए हैं कि दोनों अलग हैं। मैं सिंध के टूर पे गई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे कराची में इन्वाइट किया था मुझे, वहाँ पेपर भी पढ़ा था दूसरी शायद सचल शर्मा। और मेरी एक कविता जो है बाबुल के आंगन में, वो वहाँ के लाहौर की मैगजीन है वहाँ में। मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगी, अपनी सिंधी में कविता पेश करूँगी, उसके बाद उसका ट्रांसलेशन। पहली जो कविता है उसका टाइटल है बनवास, सिंधी में पढ़ रही हूँ पहले। कने मरंदो एरो वाह, कने मरंदो एरो वाह, जने जन्मभूमि जी मिट्टी माथे लाइंदस, रावत 14 सालन जो बनवास काटू, मीचो बनवास थींदो कॾहिं पूरो, तार वीणा जी मन जा वरी वरी छिलो था पवन, तार वीणा जी मन जा वरी वरी छिलो था पवन, बेताब दिल में मधुर गीत गूंजण बदिरां निकिरे थी आह ऐंता, बेताब दिल में मधुर गीत गूंजण बदिरां निकिरे थी आह ऐंता। हाय कहिड़ी के कई ॾिनो पारा तो, हाय कहिड़ी के कई ॾिनो पारा तो, बहिराण जे मौजुनि मानण ते बहिराण सिंधू दरिया, बहिराण जे मौजुनि ते मानण ते दीना जो दर वहीदा जो हक़, ही बनवास तो लाइ जनम जन्मांतर जो आ, ही बनवास तो लाइ जनम जन्मांतर जो आ, हो त संकट विमोचन ईंदो जो वतन जी मिट्टी माथे लाइण लाइ दीना लाइ पार ऐं राह करे, मुंहिंजो बनवास करे पूरो, मूंखे पार पुॼाईंदो, मूंखे पार पुॼाईंदो। ये मैंने अपनी कविता सिंधी में इसका अनुवाद किया है। भगवान अटलानी जी जो चेयरमैन थे राजस्थान सिंधी एकेडमी के, और मीरा अवार्ड मिला। और ये दूसरी पुस्तक जो है इंग्लिश में मेरी ट्रांसलेशन है, पोएम्स की, अमेज़न पे अवेलेबल है, डॉक्टर विनोद आजूदा ने की है। बनवास सिंधी कविता आपके सामने पेश की, उसी का अनुवाद पेश कर रही हूँ राष्ट्रभाषा में। कब बदलेगी हवा अपनी दिशा, कब बदलेगी हवा अपनी दिशा, कि जन्म भूमि की मिट्टी का चंदन लगाऊंगी मस्तक पर। राम का पूरा हो गया था बनवास 14 वर्षों में,
राम का पूरा हो गया था वनवास 14 वर्षों में, कब खत्म होगा मेरा वनवास। मन वीणा के तार झनकृत होते हैं बार बार, बेताब दिल से मधुर गीतों की गूंज नहीं निकलती है आग और तरह। न जाने कौन सी केकई ने दिया अभिशाप, न जाने कौन सी केकई ने दिया अभिशाप कि मैराण की लहरों से आनंदित होने का अधिकार वीणा को नहीं बहिता के पास है। क्या जन्म जन्मांतर के लिए मिला है मुझे यह वनवास। आएगा कोई तो संकट विमोचन, जो देश की मिट्टी मस्तक लगाने की राह करेगा रोशन, पहुंचाएगा मुझे उस पार, करेगा खत्म मेरा वनवास, मेरा वनवास। और ये जो है एक और कविता में मेरी रेडियो आकाशवाणी में एज अ ब्रॉडकास्टर मैंने ज्वाइन किया 1971 में। बांग्लादेश वॉर लगी थी तो वहाँ उससे मैं सिंध में हमारे डिवाइडेड कर दिया, अभी भी वहाँ पे है। तो उससे पहले जो है हम लोग निकल के आ गए और फिर बाद में रास्ते बंद हो गए पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात में। तो ऐसे लगा कि मेरे लिए जो है ऑल इंडिया रेडियो की एक्सटर्नल सिंधी सर्विस मेरे लिए खुली है। एकदम मेरे को सिंधी में वहाँ के अपार्टमेंट मिली है, युवानी में फिर है। तो ये उसके ऊपर रेडियो आकाशवाणी के ऊपर मेरी जिंदगी की जो है कुछ तासरात है। मेरी जिंदगी भाना भाना, मेरी जिंदगी भाना भाना एक स्टूडियो के बड़े कमरे में भी घर के 4 दीवारी अंदर टी समाजी सरगर्मी के पकड़े चक्कर में चौथी तकलीकी सरगर्मी से डालेगा हर हर अधूरी अणपूरी चैनिन दिशाओं में गिरजली रही थी। हाय ये मजबूरी, हाय ये बेबसी, छा जमा छा न जमा इन्हें ये गण गोतमी कने जुड़बी रहा की, कने रोंदी रहा की, कने बजरबी रहा की। हाय मेरी जिंदगी भाना भाना। इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्टर विनोदा सुदाने। I have got a fragmented life, a fragment confined to studio, a fragment within 4 walls of a home, a fragment in social activities, a fragment in literary activities. My life is incomplete, drags on in all 4 directions. Alas, this helplessness. Sometimes I cry, sometimes I get furious. Alas, I got a fragmented life. अब एक छोटी कविता आपके खिदमत में पेश करना चाहूँगी और सिंधी को मौका मिलता नहीं है स्टेट से। हम लोग यहाँ पे सबने हमारे साथियों ने बहुत अच्छी कविता 2-2 4-4 पढ़ी। इंटरनेशनल वुमेन डे के सिलसिले में मैं ये पढ़ रही हूँ, उसका सिंधी में नहीं पढ़ रही हूँ, अनुवादित हिंदी में पेश कर रहे। मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, हाँ एक औरत। मैं औरत हूँ, हाँ एक औरत। कभी चंचल कभी नटखट नारी, कभी चंचल कभी नटखट नारी, कभी छुई मुई सी लजाने वाली रुचि, कभी सुंदरता की बेमिसाल प्रतिमा। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है ये कि ये सारे संबोधन पुरुषों ने अपनी सुविधा के लिए खड़े हैं, क्षण भंगर इच्छा की पूर्ति के लिए, ताकि आराम से जला सके वो औरत की लज्जा को, ताकि आराम से जला सके वो औरत की लज्जा को वर्जहीन आग में। मगर मेरा भी संकल्प है कि मैं नहीं जलने दूंगी अपनी लज्जा, अपना अस्तित्व मेरे साथ है, मेरा संकल्प और मेरा सत्य। सिंधी भाषा, सिंधी कल्चर, हिस्ट्री के बारे में हमें और भी जानना चाहिए। Thank you for sharing your poetry. We move on to the last poet for this. Yeah. We have with us Miss Mercy Margaret, representing Telugu language. She is the Telugu poet, writer, playwright. She has 3 poetry collections and a play to her credit. Her poems got translated in all the southern languages and published in all main line newspapers and magazines. She started
Kavita Shala, an organization in which she is organizing poetry workshops, seminars, poetry reading sessions, etc. She is the recipient of Sahitya Akademi's Yuva Puraskar, Penna Sahitya Award, Champ Spandana Literary Award, and Kavi Sangamam Award. Thank you. I'm Mercy Margaret, a Telugu poet, reciting my first poem in Telugu. Kavita Shirshika Abhyantara. ఆమెని ఇంకొంచెం సేపు పడుకోనివ్వండి. ఇంకొంచెం సేపు ఆమె కలల్ని మెత్తగా తడమనివ్వండి. ఆమె రెక్కల్లో ఇంకొంచెం గాలిని నింపుకోనివ్వండి. కొంచెం వెలుతురు ఆమె పాదాలకి లేపనంగా పూసుకోనివ్వండి. ఆమె కళ్ళ చుట్టూ ఉన్న కంచె తీసి ఆమెని ఆమె కళ్ళతోనే చూడనివ్వండి. మీ పాతవైన కళ్ళను ఒక్కసారి పక్కకు పెట్టి ఆమె చూపును అరువడుక్కుని చూడండి. ఆమెను ఆమె ప్రేమించుకొనియండి. ఆమె కౌగిలిలో కొంత గాలి వెలుతురులను నింపుకోనివ్వండి. ఆమె కవితల్ని ఆమెనే అల్లుకోనివ్వండి. ఆమె ప్రతీకల్లో ఆమె ఉనికిని ఒప్పనీయండి. ఆమె స్వప్నంలోంచి అసంపూర్ణంగా బయటికి లాక్కండి. ఆమె స్వప్నంలోంచి అసంపూర్ణంగా బయటికి లాగకండి. ఆమెని ఇంకొంచెం సేపు పడుకోనివ్వండి. ఆమెని ఇంకొంచెం సేపు పడుకోనివ్వండి. And the other poem I'm straight away reading in Hindi. The title of the poem is Loh Pushp and translated by Ganesh Ramsden. अंधेरे की मदिरा पीकर गड़ी के मस्त सोने की इस वक्त उसके बारे में आपसे बतियाना है. पहाड़ की खोख में पिंड के रूप में उसका बीज वापन होते ही मैंने उसके दर्शन किए. लोह पुष्पों से स्पर्धा करते उसका प्रफुल्लित होना भी मैंने देखा है. डगमगाते पगधरते रोडों से होड़ लगाती चलने से लेकर मैं उसके पदचापनों का अमूल चूल अवलोकन करती आ रही हूँ. उसके निशब्दों को मेरे दिलो जिगर सुन सकता है. मेरी किताबों के रंग बिरंगे शीशों पर उसका वार्तालाप अकेलेपन के वर्णमाला के रूप में उकेरा हुआ है. शीशे के किताबों के पन्नों पर ताबीजों पर हरफों की तरह कुरबुलाने वाली बातों की माहिर चपवाकर मेरी ही बांधती वह भी गजल करने बैठी हो उभरे अल्फाजों में दिखाई देती है. अकेले पड़ गए अजनबियों से मैं हूं ना कहती. उसके जिस्म में बहता पानी आधी नींद में ही जागरण गीत गाने लग जाते हैं तो वह झुककर हर दर्द की नींद बचाती है. हर मोड़ ढलान पर वह हर कारे को उसकी बूंदों से नहलाती है. समंदर लहरों से पैगाम इकट्ठा करती है. चितपन में बाहर में उतराती आई आंखें मीन मच्छियों से अटखेलियां किलकारियां करते वक्त जालों के बीच बाग को ललकारते वक्त उसकी नस का चलना मेरे कानों में दगदग करता है. उसको राज की बातों का पता है. वह आफहम से अनजान नहीं है. ओझल चीजों देखने की उसमें हुनर है. नाग चंपा के खिलने का मतलब जानती है. पहाड़ ने उस पर पेड़ों कैसे चापा है जानती है. आसमां अपने आकार बदलकर कैसे गल जाते हैं उसे पता है. मेरी ही तरह उसके भी अनगिन लोगों के नाम है. मेरी ही माफी वह भी बहुरूपों से घन द्रव वायु पदार्थों में समा जाती है. आधे आसमान को जमीन पर उतराकर उस पर वह पगधरती है तो समस्त दिशाएं सिकुड़ कर शाखाएं बन जाती है. समुद्र को आंसुओं से मिलाकर उसने दीवारें खड़ी की. विश्व भर में परिव्यापित महान राजा महाराजा भी उसका कम से कम टक्कर नहीं कर सकते. मेदिनी के वेदी बनकर दंडहिमान अनल को आंखें बनाकर पानी को उसके सामने विदा मार्ग बनाकर उसने चलने का श्री गणेश किया.
उसके गिरदा अतः अनंत परावार कवच बना। वह बोलती है तो बादल बन जाती है, वह गाती है तो पद परिंदों की तरह उड़ते हैं, वह नाचती है तो दुनिया उसका रंगमंच बन जाती है, वह डरती है तो ग्रह गोल सर नवाकर दो जून हो जाते हैं। पैर रखने की हर जगह वो जंगल सर जाती है, आसमान उसके सामने स्कूल के बच्चे की तरह चुप बैठ जाते हैं। उसके लिए वे एक दिन निर्धारित कर उत्सव मनाते हैं, उसके लिए वे एक दिन निर्धारित कर उत्सव मनाते हैं, तारीख तय करके उसके अस्तित्व को फिर सिमटने में देवी बनाकर उसे रेशमी विशालों से डाफ कर सोने से सराबोर करना काफी है, समझने वालों की गलत फहमी है। वह तो अब देवी देवता की मातृमूर्ति नहीं है, निसर्ग को अपने में आत्मसात कर एक और आकाश गंगा तक उड़ान भरने में सशक्त अनंत पक्षों वाली पुस्तक है। मेरी ही तरह वह भी प्यार मोहब्बत से जल पसीज जाती है, प्रवाहमान प्रेमी के संग ममिक होकर अनजाने राहों में गुमराह हो जाती है। अनगिन दशाओं के मेरे इतिहास में नुस्ख उठाती, कई सारों को माफ कर भूल जाती है। नदी की तरह फिर पहाड़ की कोप में जाकर उपन कर नया इतिहास रचती, नए सिरे से आविष्कृत होती है, नए सिरे से आविष्कृत होती है। Thank you. We are very short of time. We would like the audience to have an opportunity to speak, maybe ask questions of this wonderful galaxy of writers who been a rich array of poetry. So we have about 5 or 6 minutes for very, very short comments. We have eminent writers in the audience, indeed very fortunate to celebrate International Women's Day, the variety of language poetry and also a wonderful audience. Please go ahead if you have brief comments. One point from you, ma'am. No, what they are expecting that since you do write, so that's why. Yes, please. Well, it's my opportunity to chair the session, a great privilege, and to listen to all of you. I'm not sure I have anything like that. Okay, I'll read just a very brief one because I made the point that women's writing is often very personal. But that personal is also political and is also public. So, that's my sense of it. Others are perfectly welcome to have another view. So, it took me a very long time to go public with my poetry and to publish it. Lakshmi, Chandramohan, Alka, they known me for a very long time. Because I found it very difficult to come out with autobiographical poems. Nevertheless, I did, and this one got published in the International Journal. It's called Dreaming of Ma in Camden. Now, Camden is in the United States, and my mother, who is no more and has not been here for very many years, she was very close to me, and mother-daughter relationships are always very precious. So, it's a poem about cross-culturalism and the awareness of that. You live somewhere between the black night and the bright star, free of body and its temporal limits. In green leaves turning to red in a mellow autumn, I catch a glimpse of the sari palla. On that day, you knew life was short and might become shorter. In the shimmer of an unsteady wave on the lake, I recall your tremulous smile when you told us of going under the knife. In the rough-hewn rocks that line the harbor, I remember your will to fight an uneven battle with the rogue cells. Here, on shores unknown to you and me, we meet again, when the dark sky rests on the sparkle of stars, living and dying are no longer apart. Right. It's kind of you to listen to a short poem by me, and I take this opportunity to open up the floor to members of the audience, please. Yes, please, Rameshji. Yes. I'm not a literary person. I'm a scientist. Rameshji, please, mic on कर दीजिए.
मैं लिटरेचर की नहीं हूँ, साइंस पर्सन हूँ, रिटायर्ड एज डिप्टी डायरेक्टर फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। आज हम लोग विमेंस इंटरनेशनल विमेंस डे के लिए करते हुए मैंने सबको ही सुना, बिकॉज फॉर द लास्ट 50 years आई एम विद a literature person. So I developed that taste, and also I used to read a lot because we have all English books in my house. मैंने ये देखा है, अब ये स्टोरी कि मैं पंजाबी हूँ, पंजाब में जब मेरी ग्रैंड मदर थी तो भी शी वॉज एम्पावर्ड, जब मेरी माँ थी वो भी शी वॉज नो लेस ऑफ पावर, और अब हम तो खैर है ही है। लेकिन यूपी में मैं वहाँ पढ़ी हूँ, और आजमगढ़ के पास एक मऊ जगह है, वहाँ मैं पैदा हुई। पंजाबी घर आने की वजह से वहाँ पे जो है पंजाबी फैमिली एक हमारी थी, बाकी कोई दूसरा पंजाबी घर मैंने शादी के बाद देखा, तब थे गए ही नहीं थे, पंजाबी मूव नहीं किए थे, क्योंकि वी आर फ्रॉम लुधियाना, पाकिस्तान वाले हैं। वहाँ पर अब मैं आफ्टर 30 years गई हूँ BHU, और मैं BHU में अपने हॉस्टल में गई। मेरा फादर पंजाबी होने की वजह से, बिकॉज नाउ आई फील आई एम 70+ retired person and have so many types of exposure, दिल्ली के सारे स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल्स ये हो गए। रमेश जी आप थोड़ा सा मैं सवाल पूछ लीजिए। ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ की विमेन अभी भी वैसे ही है, नो चेंज। हम यहाँ बैठ के इतनी सारी बातें कर लेते हैं बिकॉज वी आर एजुकेटेड, और वाई वी आर एजुकेटेड बिकॉज हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो मैडम की तरफ, बिकॉज वी बिलोंग टू गुड फैमिली। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी भी वो वैसे ही है। Any responses? Alka, did you want to say something? Bolo. Thank you for this rainbow of poetic rust. I really like all the poems were very powerful in the tone that they express, which comes from a very urgent woman's space, like which belong actually only to a woman's realm. And I appreciated our young poet in Hindi who is experimenting in different languages, as Malavi said. So, and congratulations to everybody. Thank you. Thank you, Alka, for your appreciation. And we take one more comment and then go on to close the program. Please. Just a few words. ये जो क्रिएटिव वर्ड के शेयर है बिटवीन मेन एंड वुमेन, मे बी ये बहुत जल्दी थोड़ा सा और एक इशू मैं बोलना चाहती हूँ कि वो दैट विल बी शेयर्ड बाय मशीन्स, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आल्सो स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन। सो मे बी बहुत ही जल्दी हमें ऐसे सेमिनार में मिलना पड़ेगा जहाँ पे द लिटरेचर इज रिटन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन बीइंग, तो मेन एंड वुमेन बोथ एक साथ included होके ऐसे कोई सेमिनार में हम मिलेंगे। I hope International Women's Day will still be celebrated. Please, we need the women's voice. So I'll hand over to Science Academy representatives to conclude the session and give the vote of thanks. Dr. Chandramohan, यहाँ ज़रूर। आप आज minority में इसलिए आप ज़रूर बोलिए। Actually, very briefly, we're very short. No, एक minute बस. Actually, as Madhi has said, that she and our friend Kananji, Alka, we have been doing a lot in women's studies. So I have done 2-3 books on women and development, etc. Now, this experience coming here fills me with this delight to say that it was a bonanza of poetic expressions coming from all parts of India, of country. And I go back with this satisfaction that this was not very much up the side. It was so real, so true, so sincere, as Mr. Sharma has early morning said. I really like this whole atmosphere. So my compliments and my congratulations to the Academy, to all the poets, and really I give it from my heart. Thank you very much. Thank you very much for your appreciation, and I'm so glad to see men and women
celebrating International Women's Day together. Suresh, you over there. Thank you, ma'am. दरअसल मैंने ये सभी कविताएं सुनी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जो कविताएं सुनी, जो ऑब्जर्व किया, उसमें जो महिला सशक्तिकरण है वो एक तरीके से आउटर है, मेटेरियलिस्टिक, या फिर जो हमें बाहर सामाजिक अधिकार मिले, या फिर हम जितना बाहर एक्सपोजर करें, लेकिन कविताओं में इनर एम्पावरमेंट की कितनी बात होती है कि एक महिला आंतरिक रूप से कितनी सक्षम हो, और उसका एक एक्सपोजर जो इंटरनल हो, जो हमारी वैदिक कल्चर या फिर हमारा जो फिलॉसफी है स्पिरिचुअलिटी, उसमें इनर एम्पावरमेंट की कितनी बात और हम कविताओं में करते हैं। Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am, for patiently presiding the entire session and by listening to everyone. Thank you so much. But only at the conclusion I would say, I think the perception towards women by the 21st century has been changed a lot, because of which I think we are still using the same phrase of Vedas, that yatra naryastu pujyante ramante tatra devataha. It is only reminding time and again that this is how we are supposed to look at. So thank you so much, ma'am, for your wonderful words and patience. And I sincerely thank on behalf of Dr. K. Srinivasarao ji, our most respectful secretary, sir, to Dr. Ajit Kaur ji, Dr. Nasira Sharma ji for patiently spending their valuable and most important time with us. And I sincerely thank Professor Mala Srilal ji for her wonderful way of presiding over this session. And I sincerely thank all the poets, right from Ratnatrama Das ji, Trina Chakravarti ji, Lakshmi Khannan ji, Chaya Trivedi ji, Soma Bandyopadhyay, Professor Soma Bandyopadhyay ji, Miss Swati Sharma ji, Miss Sunita Raina ji, Miss Sanjeevani Deshpande ji, Miss Pravasini Mahakur ji, Miss Trina Tarinder Kaur ji, Miss Veena Shringi ji, or Miss Mercy Margaret. With these few words, this session has come to an end, and on behalf of Secretary Sir, I sincerely welcome all of you to join the match. With this program has come to an end. Thank you.